I think voice has not been shared. पॉज कर दिया बीच में माइक ऑन So, good morning, all. And as you are aware, today we are going to discuss Foreign Trade Policy 2023, which has been issued by the Government of India on 31st March 2023. And if we see the entire policy, the same has been basically divided into the 11 chapters. And all the three speakers have divided these chapters between them and will be dealing with the relevant chapters. So if these 11 chapters are seen, they are basically like legal framework and trade facilitations. Then there are general provisions regarding imports and exports. Then developing districts as export hub. So Government of India is basically identifying each districts as export hub by in fact identifying that what are the products which they can actually export. Then there is chapter related to the duty exemptions, remission schemes, export promotion, capital goods scheme,
then EOU, Electric Hardware Technology Park, Software Technology Park, deemed exports. So again, when even if you are supplying within India, domestic sale, that is being considered as deemed exports, and then relevant provisions are being provided by way of this policy. Then quality complaints and trade discounts, promoting cross-border trade in digital economy, and then SCOMAT, that is special chemicals, organism, materials, equipments, and technologies. So these are the basically chapters which are being covered by the speakers. And we do have today our keynote speaker, Rahul Lakhwani ji, who is practicing as advocate. He is also a chartered accountant. Uh, uh, our student will introduce, Suhani Mantri will introduce him. So before she introduce, Rahul ji, basically, you have to actually set the tone for this particular session on foreign trade policy. So you are the best just basically how to set this particular tone in this particular webinar. So I would not say anything on that. We have our partner Manish Maliwal ji also here today, and students would like to would be pleased to know that this webinar is also attended by few of the members ICI chartered accountants and one of the banker also. So which I have also conveyed you earlier, that responsibility on the speaker is not only to address the students, but also to the various senior people, senior professionals also. So your preparedness should be accordingly there. So with this, I request Suhani Mantri to please introduce Rahul Lakhwani ji, and then we can proceed further in the webinar. Good morning, everyone. I'm happy to have the opportunity to introduce the eminent personality having practical experience for past 12 years. I, Suhani Mantri, on behalf of Kalani and Company, welcome our guest, CA Rahul Lakhwani, a prestigious legal advisor from Jaipur. It is a great honor for all of us to have you as a guest for this professional discussion on foreign trade policy 2023, sir. Sir barely requires an introduction though. At present, he is a senior partner at Cheer Amrit Legal LLP and primarily handles and manages the indirect tax practice at the firm. He has appeared in several matters before the Honorable Supreme Court, Honorable High Court of Rajasthan, and various quasi-judicial appellate and adjudicating authorities. He has also successfully represented Rajasthan Police, Rajasthan Civil Aviation Corporation, Krishi Upaj Mandi, and various other state and central institutions and PSUs. He also regularly advises his clients consisting of various leading corporate houses and multinational companies in matters relating to GST, excise entry, and VAT. And lastly, I would like Sir to please enlighten the articles with his words of wisdom. Is this now over to me? Yes. Yeah. So, very good morning to all of you. First of all, Bhupenji, thank you so much for inviting me to this session, when you make a platform available for all the aspiring chartered accountants of Kalani Group. And also, as you have just mentioned, that there are certain professionals also. So I have to make sure that I make some value addition to their knowledge also. But definitely, I would like to take up in a manner how CL sir used to say that make your basics strong, the foundation strong, and the things will go on. So I would like to take up the basics importantly in today's session. And also Maniji, who is the part of the Kalani group, is there. And thank you so much for inviting. I would straightforward jump to the part which has been given to me, because 11:26 right now, and what I've been given to understand that by 11:45 I have to conclude. So I have barely 19 minutes to take up my matter. You can take another 4-5 minutes because we are running quite late. So nice of you. Yeah, I would like to do because see, I have to just set a tone. I am trying to make that
because as you have given an introduction that we are going to have the discussion on foreign trade policy 2023, which has just been introduced. But see, it's always important to understand from where this policy is coming up. It's very interesting to know this policy is a part of just simpler 20 section FTDRA Act. So how come this 20 simple section FTDRA Act is governing the entire import and export of the country? That is very important for us to understand. So coming on that, prior to that, I had prepared screen sharing permitted to me. I guess Yeah, yes. you can say. Yes. So I hope so. One small slide I have prepared just to set the tone or just to cover the important points. So is it visible to everyone? Yes. Yes. Fine. So let me start with a very basic thing. What does foreign trade means? And Govinda, can it be little interactive? I can have questions because I want someone who is interested to put up certain questions which I'm giving. I just don't want it to be it a monologue. So either the Yeah. 2, 3, 4 persons, or better to say there are 3 speakers, I guess, correct for today? Yeah. So my So all questions are to those 3 speakers only, or better to true. say these are not questions. I just wanted to set a tone. So everyone in the who's the part of the audience should be thinking on what line I'm taking it further. So what I'm saying that these 3 speakers who are there, they are just going to they please unmute themselves. Whosoever want to answer on these. And participants can also give their answer in the message box, chat In box. the message, that would be great. That would be great. So even I can look into what sort of discussion they have in their mind. So may I know who Right. 3 are there as a part of today's panel? Can a little introduction of hello, hi, please? Morning, everyone. Hello. Yes, may I know name, please? Hello. Good morning, everyone. I am Kusum Thawani, along with my co-presenters Prateek Singhal and Yash Jawar would like to present, we like to introduce ourselves to you. Okay, great. So what we can do, again, you will when you will start, you can have your part. But these 3 persons are there on my target list today, correct? Yeah. Just joke apart. I just wanted to make an interactive discussion so that the people who are the participant may think. So let me start with a very important thing. Foreign trade. I have written import, export, and then I have put 2 question marks. So why these 2 question marks there? So whether something else is also part of foreign trade, that would be my first part of discussion. Because see, what we are covering today is a foreign trade policy. So the 2 terms in foreign trade policy is foreign and trade. So this foreign trade first need to be understood. What is the scope of that? Then only we can jump to policy. And even prior to that, I would be taking Foreign Trade Development Regulation Act, a basic overview. So what does foreign trade means? This is important for us to understand. Is there something other than import and export? Any 3 of them? Yes, it is basically a wider term than exports and imports. It consists of schemes and various policies which are implemented while exporting and importing things. Okay. So see, I tell you, I would just take it little further. When you talk about foreign trade, the first impression with respect to term import and export comes that import and export means some goods crossing the custom frontiers of the country, either when coming to India or going out of India. Because the term import and export has been classically defined in the Customs Act, which is an act even prior to FTDRA Act, 1962 Act. So concept which comes in mind, something which comes and goes out, that only will tantamount to export or import. Now, let me give you some sort of change in the way the cross-border transaction happens. When this import and export terms were coined, or better to say post-independence, the services export was not even considered as something which is important or something which need to be discussed upon. But liberalization and post that service industry taking up a job, the import and export term to me have gone into to an extent where services are involved. And I tell you, it is very easy to identify import and export with respect to goods because there's a physical thing which is moving from one frontier to another. But mind it, services also move from one geography to another geography
Identification of that is very difficult, but they are also part of import and export. That is one, because many times people will say import and export, they just imagine what capital goods coming into or goods going out. No, it also includes services. That is one. And there's a classical discussion that what is goods, what is services, particularly in respect to software. I'm not covering that. Just giving you a, I should say, wider horizon when you're looking into Foreign Trade Development Regulation Act or the policies. Now, another important, is it necessary that with respect to goods, the crossing of custom frontiers may happen? My answer is no. It may happen with respect to applicability of the Customs Act, but when you talk about foreign trade, you need to understand that they are transition called transshipment. They are transition which are called as merchant trade. They are transition which are called as high sea sales. All these are also considered as import and export. However, there will not be any movement from custom frontiers in and out. First, let me say an example. Last week, yesterday, only morning, I have came from Dubai. So Dubai is a market, or better to say the Emirates is a market, wherein the consumers are only and only 1.5 crores. Still, their foreign trade, if you count, may cross many countries in terms of size. The reason is that that is a hub for the purpose of carrying out trade, wherein there is no crossing of custom frontiers. There is no movement of goods from one geography to another, entering of goods into the geography. They are plainly that the good will emerge from China, it will reach to Egypt, it will reach to African market, and the entity which is sitting then in there will do it by way of a transshipment. So whether that is import and export, my answer is yes, that is also import and export. Now, if you look into the Customs Act, you might say, नहीं ये कैसे हुआ? But ये भी है. Because जब हम foreign trade की बात करते हैं, then you have to see the wider attitude, wider things. So possibly when you are dealing in this, when you are looking into the foreign trade policy, kindly look into from that perspective. Now, second part, which I want to discuss, why foreign trade is important. I have highlighted 1, 2, 3, 4. There can be other reasons, but my understanding says this was somewhat will couple with the objective which I have just mentioned. But the first important part is increased output. We have crossed China in terms of population. Is it bad or good? I would always say anything is not bad and good. It is the perspective how you look into it. Now, we largest in number in terms of population and human resource can very well cater the need of Australia, which is finding itself in a very difficult position to have the basic goods available to carry out their needs. Here we look into that while we book a car, there is on account of logistics issue, there is a delay of a month or two because that would be delivered to you. But you won't believe that there are many countries in the world, including Canada, where if you book a bed or a mattress that is what we use over a bed, may take a 3 months period of time to be delivered. Why? Because in those countries, the quantum of manufacturers or quantum of persons who are available to manufacture is very less, so they're not investing on that. Now, this comes as an opportunity under foreign trade that the India, because I tell you, you need to look into foreign trade policy later. You need to look into what the government is imagining. Government is saying that we are one of the highest number of populated, we are the largest in terms of population in the world. What to do with this population? So let's invest it. China has done that investment in the past, and we all know that what size of growth they have in terms of their foreign trade. Whether India can achieve it, I am of a view, yes, they can. Because this is what you are going to study in coming 1 hour, 2 hours, that how the government is imagining, what efforts they are trying to take to have the increased output in the country, because increased output can be achieved by promoting the exporters, which is part of foreign trade policy. They try by way of this policy incentivize, or better to say holding out their hands, that you increase your output. Resultantly, what will happen? The employment will be generated in the country, and
the movement of goods from the country will lead to creation of trade surplus. Now by this I touch my third point, influx of foreign exchange and trade balance. We all know that for a country, it is important to have trade surplus. Now, when I use the term trade surplus, again, my question to the three of the panelists, what you understand by the term trade deficit and trade surplus, and whether that relevant to the foreign trade policy? Can I have any of them as volunteer? Yeah, If not, speakers, please. yeah, speakers. If not, also see, I'm not testing you. I'm just trying to see to what extent I have to start explaining. So please don't take it otherwise. I'm just asking. Any idea about trade surplus and trade deficit? The trade surplus is export is more than import. Very correct. That a country says that my exports are more than its import. So what is good? Trade surplus. And what is the other term? What is the other term? Trade Deficit. deficit. And that would be opposite situation. So the simple point is whether trade surplus is good or trade deficit is good. So trade surplus is good. Trade surplus is good. And the reason is if you have more exports, the resultant may be you will be getting more foreign currency in terms of foreign currency going out, correct? And if that is happening, you can say that we have excess amount of foreign currency, which represents the country's strength to take decision. And to a country like developing India, a country like India, which is a developing country, it's very important to have ample amount of foreign exchange so as to meet their loan obligations, so as to maintain their defense requirement, so as to maintain their other needs which may come in future. So resultant of the foreign trade policy is increasing the trade surplus. So again, when you have to look into this perspective, that whether this government is incentivizing and creating an expenditure on its own account and promoting by way of foreign trade policy to these people, what is it trying to achieve? Actually, it is trying to achieve its, I should say, past challenges, wherein it always has happened so that we are a trade deficit country. But now we are targeting, we need to be a trade surplus country. And for that, what is important? Promote the exports. Once you start promoting exports, employment will be generated. And at the very same time, foreign exchange flow will take you to that level wherein you can say that we are a trade surplus country. So the objective and idea for trade policy again goes to increasing the exports by which the trade balance may be achieved. Now, there's one more important aspect to the foreign trade policy which we need to understand is, or Foreign Trade Development Regulation Act, strengthening bilateral multilateral relationship between nations. Now, as the speakers would take through a detailed point that FTDRA purpose is to make imports easy and growing the exports. I would be covering that also in one line as an objective of the FTDRA Act. But you all know that at the time of COVID, the India as a country or as a, I should say, carrier of the international image made sure that prior to completing its vaccination requirement of the local people, start sharing the manufactured COVID vaccination to some of the countries who might not even have think of that how it can be manufactured or what can be the possible vaccination. Now, one may say that this is incorrect. The people of here have not been completely vaccinated and still they have started exporting. This is very wrong. Are they looking into money? Are they trying to achieve their trade balance? The answer is no. Why? Because when you will be looking into Foreign Trade Development Regulation Act, it's not only what, it's to get more and more money.
it's important to have an important concept that there need to be some international relations, compliance to General Agreement of Trade and Tariffs, to look into what may be possible, what may possibly happen in future with the people not having ample amount of pulses or onion. So those facts are also taken into consideration while making all the notifications and including policy under Foreign Trade Development Regulation Act read with Foreign Trade Policy. So the COVID vaccinations barter or exchange was part of what India strengthening its bilateral and multilateral relations. India has fought shortage of wheat. Always it has shortage of wheat. We have government system by which we procure wheat or other essential food grains and store them. Now, by way of Foreign Trade Development Regulation Act, the government also keeps a note on that if a country like Afghanistan or there's a country wherein the problem of wheat has so reached to a level that the people are started starving. We don't have, fortunately, we don't have that condition in India. It's easily available, but the price needs to be controlled. That's why they procure and keep in their stores. But they move it to those countries, not to earn foreign exchange, but to strengthen their bilateral and multilateral relationships. So one aspect of foreign trade, which is over and above just to increase employment or earn foreign exchange or incentivize exporters, is also to maintain bilateral relationship between various nations. So this aspect one need to also consider in mind while reading the foreign trade part of the law. Now, I'm taking it a little further. I'm taking to the objective, because whenever you have to look into any law, what you need to look into that what does foreign trade, what this particular act objects to, what is the objective of this section. I told my team to look into an important aspect that under union list, because we all know this FTDRA Act is a central statute. So under central statute, what is required that as per the constitution, whether it is part of list 1, 2 or 3. So my team has shared that entry number 41, which says that trade and commerce with foreign countries, import and export across customs frontiers, definition of custom frontiers. This is specifically included in the list 1 of schedule 7 entry 41 and also article 246 of the constitution. Both of these pieces of constitution are important if you start reading FTDR Act and then consequential policy. So I would request everyone that in the light what they are taking, they should also make a flow that let's see the constitution first, then let's look into the act and then come to the regulation. I'm covering the objective of FTDR first. It is twofold. One, facilitating imports into the country, and the second is taking measures for growing export from the country. Now, I don't know how many of you are aware of that we had an Import and Export Control Act prior to FTDRA, and after FTDRA came, it repealed that Import and Export Control Act. You can see on the slide that I have a highlighted bold under italics the term control. What does control means? That whatsoever you do, it will be regulated by us. Whether you wanted to do, control is a negative word. Whereas foreign trade development and regulation appears to be positive. So there was a change in ideology. There was change in the way the foreign trade has to be looked into by the government. That's why this Import and Export Control Act was repealed in the year 1992. Now my question again, going back to the panelist who might be thinking that why they have become panelists today, that how keynote speakers continuously pose a question to them. So my question that why the year 1992 for FTDRA Act? Any idea? Any guesses? So probably none of the panelists were born that time. So it was the year of liberalization. Yes, yes. Bhupendra has taken it very correctly. And yes,
We give them exemption of not being bought up at that time, but I was not bought when the constitution was made, but I've taken that point. So people have to go into that. So yes, Vinay has highlighted very correctly. 1991, the year of India's flip in any sort of economic policy, any sort of economic policy, whether it was domestic, whether it was international, whether it was foreign trade, whether it was PSUs, everything got changed. And there was a requirement that we have done a lot of control on import and export. And see, I tell you, when we got independence, at that time there was need of a control because India again was good in number. We were 33 crore at the time of independence. Whatsoever, they had a good labor resource, less of technology. So what even the Britishers were doing, that they were making sure that the dear colonies, including India, manufacture or produce agriculture products and take it to the various countries across the world where they can earn huge profits. And they were not doing alone. There were Indian traders who were doing for them. And there were Indian saukas, what we call them. And beyond them, they were making sure that the labor, what in India, whether the food grain is available or not. But if it is manufactured, take from them and take it to outside the country. Or if there's any technological thing or there's any handicraft, take it outside the country. The important need at that time to the government was, if anyone wants to take something outside the country, they should take permission from us. If someone wants to bring inside something to the country, they take permission from us. So that was the ideology of the Control Act. But they understood. After a good period of say 43 years, they understood that no, this way we can't work it out. We need to make sure that we need to do development and regulation. And that's why from 1991, they moved to this Act, FTDR Act 1992, which absolutely removes the word control and says that they need to be facilitating imports into the country. That if someone want to import into the country, we don't have any problem. And what we will do, we will facilitate. We will help him that you can import into the country. At the very same time, to answer the question of trade deficit, taking measures for growing exports from the country. And when you talk about foreign trade policy, it majorly covers the second part of it, taking measures for growing exports from the country. As I've said, year of introduction 1992. Why? Because liberalization happened. Now there's important thing to understand. In line with international policies and GATT, this is very, very important to understand. Because see, always the best thing is to do what? Which is in shortage, keep a hoarding of it and earn markup. And don't let others to come into your territory. That can be the best way of doing it. However, no, you can't. Because if you do this, the other will also start doing it. And at the end, what will happen? There would be always a price war. So we have some international forums, as you know, World Trade Organization. With WTO, India is one of the signatory in GATT. GATT is General Agreement on Trade and Tariffs. So they say that, sorry, if you are part of GATT, you have to make your economy free. You cannot do something which may be promoting to a local industry or derogatory to the international industries which are coming to your country. You can't do it. But whether that means that they have lost everything in terms of regulation or development, the answer would be no. Very well, there are certain clauses in GATTs which give them permission in certain situations. For say, I took an example that when the price of onion rises, they said that if you want to export onion from the country, there are specified quotas. You come, take a permission from us. We are going to grant you only with respect to onion, and then only you can do it. Or I remember a case last year, we fought a lot. It was even prior to COVID in 2018 at Rajasthan High Court. That was with respect to carrying out imports of pulses. The government allowed them importing pulses, and overnight, when the goods were in transit, the government issued a notification, sorry, we have specified quotas and we won't permit you. They were saying that our goods is on the way, please permit it. They said, no, we have given a ban and that's it. The thing ends. Why? Because they were very concerned about the price of a particular type of pulses in the country. They were saying that if we allow this much amount of import into the country, our domestic farmers may not be able to get the requisite price. So sorry,
You are not supposed to cross the custom frontiers of the goods, even though they were in transit. And why we are fighting in the High Court? We're trying to convince to the government, sorry, your policymakers, this FTDRA policy under the Act permits you to do something, but the scope cannot be derogatory to something that it may lead to huge amount of losses. Eventually, the guideline which the matter first came at High Court isn't concluded, then went to Supreme Court, and the things turned out. But what I would able to through, because that case lasted for a period of 2 years, but what I was able to go through that time is the entire scheme of the law, and I was able to understand this law, even though appears on one side to be promoting foreign trades, facilitating imports, but it is a lot about government controlling the people, the government controlling the economy, the government taking care of the masses. In light of that, this may overcome many other things. Now, what are the departments involved? Ministry of Industry and Commerce, State Administration of Foreign Trade, Ministry of Finance, the Office of Reconstruction, and Export Inspection Bureau. These are some of the departments which are involved. The section 3, subsection 4 of the Act provides the import and export of the products are considered free unless otherwise required. So they say that everything is free, you do, but unless otherwise any provision of the Act requires, then you have to take care of that. Okay. But whether there is some other law also which is in a way regulating the import and export? The answer is yes. That is customs law. And the interesting definition of the customs law of the interesting definition of term prohibited goods is before all of you on the screen. One need to look into it. It says that any goods, the import and export of which is subject to any prohibition or subject to condition under the Customs Act as well under any other law, unless those conditions have been complied with, that would be treated as prohibited goods. A classical example of a tug of war between two ministries. Now, let me take you a little of this because it is very important for all of you to understand that Foreign Trade Development Regulation Act, Ministry of Commerce, Customs Act, Ministry of Finance. And no one wants to give away their power. With Foreign Trade and Development Regulation Act, you will find that, okay, they have imposed some quota, but please ensure how to implement it. If there's a particular goods which they have said that cannot be imported, who is going to check first? It is customs. Why? Because customs only have infra, customs only have permission to sit at the time when the goods are entering into the country and examine upon whether the goods are in compliance to all the applicable laws, not only customs. So what they do, they say that you have imported this goods, huh? In our view, have not complied to the DGFT condition. They say we have complied to the DGFT condition. No, we are interpreting you have not complied to. We said, who the hell you are? They said that read the definition of prohibited goods. So the assessee were in tussles, were in sort of shock that whether we have to go and comply and explain whether we have complied to the all the notifications, including the export policy things, to the department which has issued it, that is the Ministry of Commerce, read by Director General of Foreign Trade, or do we have to take it to the customs satisfaction, that is Ministry of Finance, who are going to examine whether these benefits are available to me or not? A really classical fight, and no one is ready, willing to give its power. And more or less, Supreme Court also many times has given a very contradictory views on that. Yes, both of them have power. Sometimes they say no, in a particular matter when there is a custom notification, they only have power. But we need to understand that whenever you are looking into any benefit available under the policy, let me give you a little perspective of this also. See, foreign trade policy will outline that for the purpose of promoting the imports or for the purpose of promoting the exports, we are incentivizing if you comply with the following conditions. Let them say anything. But the point is, whether by they are saying the customs will grant you a benefit, whether GST will let you a free thing, the answer would be no. Policy is something which they are highlighting that we will give you custom duty benefit. We won't, if you comply with the following thing, if you have an advanced license, this may happen. If you have a EPCG certificate, this may happen. But mind it, the parent law is not the one which is governing the customs law. You have to go
and look into whether verbatim same language notification has been issued by Ministry of Finance, read with Customs Act relevant provision, and which is in line with policy. And many times I have found that there is a contradiction between what policy says and what is the effective notification under customs or GST law or the substantive provision of the law. And there the problem comes. There the problem comes in terms of what? You have to interpret and see who supersedes which. But litigation is there or the interpretation issues there. That is what we play into. But it is very classical example of a tug of war between. So when my learning friends will be taking all of you through foreign trade policy, mind it, if there is any sort of benefit under a particular law and there's another parent law which is governing it, there will always be some sort of notification relaxation, more or less similar to the language given in the foreign trade policy. Taking it further, safeguard measures in GATT I have already. Yeah, Yes. Rahul. Yeah. So, yeah. I have completed my way this part also. With this background given to each one of you, I hope so. I have given a clarity in terms of how you have to look into the law. I have given you a basic framework. The 20 sections FTDRA Act. One of the sections says that you can make policies, and what my learned friends are going to take is from that section what policy has been formulated. With this, I hope so. I have given a requisite background. Over to Bhupen Bhaiya. Thank you so much for inviting me to the session. Yeah, certainly, Rahul. In fact, many insights you have given about the foreign trade policy, and more particularly, uh, one can know that what is the importance of foreign trade policy. So it is not only about the exports and imports, but it's like employment generations as well as the increasing output. So if we see this developing district as export hub, as I mentioned in my initial remarks also. So basically objective is to increase the output. That yes, this particular district have this particular product which they are manufacturing, which can be actually exported if the same is produced with the quality. So it will increase the output as well as the employment in that particular district. Yes. So yes, and one fantastic thing which you have mentioned, it is it not only about the export of goods or earning revenue out of it, but about the mutual relations between the two countries. So COVID vaccination export was really a fantastic example where, of course, that time when it was exported, so politically certain statements were made कि हमारे बच्चों की vaccines जो है वो आपने बाहर भेज दी, but that was really very important at that time, and of course, if we serve the other countries in these difficult times, definitely it will have some benefits to the country in long term, so far as our mutual relations with those countries are concerned. So there are a lot of things which you have mentioned, and actually I wanted to summarize that also. But since time is short and the students have prepared really very well, so I would rather stop myself here on the whatever you mentioned. But it was really very good session you have taken. My pleasure, Bhaiya, for being invited. Yeah. So, Rahul, in fact, the class will continue even till 1:30 or 2 o'clock. So, whatever time availability is there with you, you can hear the class, and where you want to give an input, you can give those inputs. We have Manish Maliwalji also with us. So I would introduce Manishji also. He's partner with us since last 1 year. And before that, 4 or 5 years, he has joined from the industry, where he has dealt with this import-export policies of the company when he was into the industry, and presently dealing with the indirect taxes in our firm. So Manishji, are you there? And you want to
convey anything so far as Rahul ji has spoken? Manish ji? Namaskar. I am thankful to Rahul Lakhwani ji. Basically, he set the tone. और यदि कहा जाए तो बच्चों को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ठीक है, आर्टिकल से उन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ी, उन्होंने उसको प्रेजेंटेशन बनाए देंगे। कम से कम सभी को ये मालूम हुआ कि अल्टीमेटली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई कहाँ से है और उसका बैकग्राउंड क्या था। लिबरलाइजेशन के बाद जब माहौल चेंज हुआ था तो उसको लेते हुए FDRA एक्ट बना था और उसके हिसाब से ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी। इसलिए इसके लिए राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बेसिकली बच्चों को क्लियर किया है कि आपको पहले लॉ कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और किस ढंग से आगे रिलेवेंट चीजों को पढ़ के और एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। अब मुझे लगता है कि हमारे टीम को है ना अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए। थैंक यू। Correct. So over to the students speaker. Yes, sir. So let's Yeah. start with our presentation. You can see India's macroeconomic picture. GDP growth for year 21-22 was 8.7%. Projected GDP growth for Your screen is not visible. Sir, is it visible now? Yeah. Okay, sir. Yes, it's visible. Please go ahead. Okay, sir. Projected GDP growth for year 22-23 is 6.5%. India is now the world's fifth largest economy in current dollars. So our first topic is legal framework and trade facilitation. Legal basis of foreign trade policy. The central government in exercise of power confined under Section 5 of Foreign Trade and Development and Regulation Act. So what is Section 5? Section 5 बताता है कि foreign trade policy कौन-कौन से goods और services पे लगेगी और कौन-कौन से exceptions हैं उस केस के। ड्यूरेशन कब से ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी? 1 अप्रैल 2023 से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होंगे उन सब पे ये पॉलिसी लगेगी। 31/3/2023 से पहले के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज थे उस पे वो पुरानी पॉलिसी लगेगी 2015 से 21। So let's read it. Duration of FTP. Provisions relating to export and import of goods and services shall come into force with effect from 1st April 2023. All exports and imports made up to 31st March 23 shall accordingly be governed by the relevant FTP unless otherwise stated. Amendment. Central government can bring amendments in this policy under Section 3. Section 3 gives power to central government regarding provision making for import and exports of goods. Amendments can be made through notifications. Handbook of procedures, appendixes and आयात नियत forms. आयात नियत forms क्या होते हैं? आयात नियत forms अपन को जैसे फॉर्म 10A हो गया, वो अपन को SCOMET प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के रिलेटिंग बताता है। और हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स पूरा स्पेसिफिकली डिटेल में हर प्रोसीजर बताती है कि कैसे इंपोर्ट होगा, अगर ये गुड्स है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। So let's move to our second slide. तो बेसिकली जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ने की बात करते हैं तो आप एक चीज को समझिए कि इट इज ए पॉलिसी एंड पॉलिसी कैन नॉट कवर एवरीथिंग। पॉलिसी में जो बातें होती है वो प्रिंसिपल बेस्ड होती है और बहुत सारी चीजें जो है वो उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड टू गो टू दी रेलेवेंट लॉज, relevant notifications which are issued by the government, which may be related to the customs, GST as well as excise so far as this foreign trade policy is concerned. तो आप जब पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो जैसा राहुल सर ने भी बताया कि आप उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन की बात बताई दैट व्हाट विल एक्चुअली प्रिवेल ओवर दैट। तो पॉलिसी जब पढ़ रहे हैं तो आप साथ ही साथ जो रिलेवेंट नोटिफिकेशंस हैं चाहे वो कस्टम के हैं या जीएसटी के हैं उनको भी आप साथ देखें, then you will be able to understand the exact procedures for the purpose of implementing these policies. You can continue now. Yes, sir. If any specific provision is spelled out in FTP Handbook of Procedures, the same shall prevail over the general provision. अगर कोई गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोविजन रख रखा है कि अगर इसका एक्सपोर्ट करना है तो ये इसी उसमें होगा, इसी प्रोसीजर को फॉलो होकर होगा,
तो फिर वो ही प्रिवेल होगा, जनरल प्रोविजन कुछ काम नहीं आएगा. ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स, एनी लाइसेंस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स. हमारे साथ में आईसीआईसीआई बैंक से सुरेंद्र भारद्वाज जी है और उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात इस पॉलिसी के बारे में बताया है. ही हैज एक्चुअली गिवन अ मैसेज इन द चैट बॉक्स. ये जो पॉलिसी है वो शुरू हो रही है, ये पॉलिसी खत्म नहीं हो रही है ना. तो दिस पॉलिसी डज नॉट हैव एनी एंड डेट सो फार एज इट्स validity is concerned. So till the new policy doesn't come, this policy will continue. So thank you, Surendra ji. Thank you so much for your update. Thank you, sir. Actually, just wanted to see the change that that 5-year period has been removed now. It will be updated as per the need. Correct. And so it will continue Correct. like master directions of Reserve Bank of India. They get updated from time to time. Thank you. Correct. And we are honored to have you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Continue, please. Yes, sir. Any license, authorization, certificate, script, instrument bestowing financial or fiscal benefits issued before commencement of fiscal foreign trade policy 2023 shall be continued to be valid for the purpose and duration for which it was issued unless otherwise stipulated. अगर कोई लाइसेंस किसी को ग्रांट हो गया था पहले ही, तो वो इस पॉलिसी के आने से पहले अगर किसी को लाइसेंस ग्रांट हो गया था तो वो वैलिड रहेगा. इस पॉलिसी के आने के बाद वो लाइसेंस नहीं बदल जाएगा. जितने ड्यूरेशन के लिए वो लाइसेंस ग्रांट था वो वैलिड ही रहेगा. In case of change of policy from free to restricted, prohibited, state trading or otherwise regulated, the import-export already made before the date of such regulation restrictions will not be affected. However, import through high sea sales will not be covered under this facility. High sea sales क्या होता है कि जब अपन import करा देते हैं goods, वो in transit है, पर जो exporter था जिसने goods import कराए हैं, उसने पहले ही sale कर दिया उन goods को जब वो transit में थे, तो उसे बोलते हैं high sea sales. ठीक है? Whenever government brings out a policy change of a particular item, the change will be applicable prospectively, that is from the date of notification, unless otherwise provided for. Trade facilitation and ease of doing business. National committee बनी है trade facilitation में ताकि वो trade facilitation agreements को implement कर सके. Trade facilitation agreement के 4 pillars होते हैं. Transparency, पूरा जो भी आपकी information है वो एक कॉमन पोर्टल है जहाँ पे आप डाल सकते हो. टेक्नोलॉजी पूरा कॉमन पोर्टल है, सब इलेक्ट्रॉनिक है तो टेक्नोलॉजी आ रही है. टेक्नोलॉजी है और आप जब भी 24/7 आपकी सर्विसेज अवेलेबल है तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड रिस्क बेस्ड असेसमेंट्स है. और एक्सपोर्ट्स अपन को बढ़ाना है तो अपन को इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना होगा, लाइक रोड्स, रेलवेज, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन सब सही है नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन. नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन. India has ratified the World Trade Organization's Trade Facilitation Agreement in April 2016 to facilitate coordination and implementation of TFA provisions. An interministerial body, that is National Committee on Trade Facilitation, has been constituted. TFA emanates from the following 4 pillars: transparency, technology, simplification of procedures and risk-based assessment, infrastructure augmentation. नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान का मोटिव क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं ये अपन देखते हैं. इम्प्रूवमेंट हो बिजनेस को करने में, पेपरलेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो, कार्गो रिलीज टाइम कम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी मिल जाए और क्लाइमेट अच्छा हो जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए उसके थ्रू. ये सब इसके मेन एम है, ये सारे नहीं है, ये सिर्फ मेन एम है. इन सबसे क्या होगा, मेन तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और टाइम भी बचेगा. Free passage of export consignment. Consignments of items meant for export shall not be withheld delayed for any reason by any agency of central or state government. In case of any doubt, authorities concerned may ask for an undertaking from exporter and release such consignment. No seizure of export-related stock. अब क्या है कि कोई गवर्नमेंट की एजेंसी या गवर्नमेंट खुद किसी भी स्टॉक को सीज नहीं कर सकती. अगर उसको कुछ गलत लग रहा है तो वो सीज कर सकती है, पर वो उसको 7 डेज के अंदर अपलिफ्ट करना पड़ेगा उससे अंडरटेकिंग मांगकर, और वो अपलिफ्ट नहीं कर रही है, मतलब अगर कुछ ज्यादा ही इरेगुलरिटीज है तो वो अपलिफ्ट नहीं कर सकती 7 डेज में, वरना विदिन 7 डेज उसको अगर कोई भी उसने सीज कराए स्टॉक तो उसे रिलीज करना पड़ेगा. अगर उसने ज्यादा टाइम तक सीज वगैरह करा उसके प्रीमाइसेस को तो उससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और डिलीवरी शेड्यूल डिले हो सकता है. नो सीजर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक. नो सीजर शैल बी मेड बाय एनी एजेंसी सो एज टू डिस्टर्ब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, delivery schedule of exports. In exceptional cases, concerned agency may seize the stock on the basis of prima facie evidence of serious irregularity. However, such seizure should be lifted within 7 days unless the irregularities are substantive.
एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अपन सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी कम होती है, तो अगर अपन उसको एक्सपोर्ट करेंगे और इतनी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरे करेंगे तो ऑब्वियसली उनमें डैमेज पहुंच जाएगा। इन सबको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है कि आप अपने जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो आप सिंगल एजेंसी को सबमिट कर दो, rather than submitting with different agencies at different locations. To reduce the transaction and handling cost, a single window system to facilitate export of perishable agriculture produce is being facilitated through Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. Neeraj Bandhu hand-holding scheme for new export-import entrepreneurs. DGFT is implementing the Neeraj Bandhu scheme for mentoring new and potential exporters in the intricacies of foreign trade through counseling, training, and outreach program, including the district as export hub initiative with industry partners, knowledge partners, and other stakeholders to create vibrant district product market relevant knowledge ecosystem. नीरज बंधु स्कीम क्या है? नीरज बंधु स्कीम गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो एंटरप्रेन्योर्स को और एक्सपोर्टर्स को बिजनेस के एसेंशियल्स बताते हैं जो रिक्वायर्ड है गुड एक्सपोर्टर बनने के लिए, अपने एक्सपोर्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए. Issue of electronic importer-exporter code. Importer-exporter code is mandatory for export-import from or to India. DGFT issues importer-exporter code in electronic form, a unique 10-digit alphanumerical code issued on the basis of PAN of the entity. 10-digit का ये code देती है गवर्नमेंट और ये mandatory है. ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर ERCMC RC रिलेटेड प्रोसेसेस. अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेना है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट वगैरह लेना है, तो आप ये सब भी ऑनलाइन हो चुका है. कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लॉगिन कर फॉर्म भर सकते हो और फिर इन सब फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हो. ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. DGFT has created a common digital platform for issue of preferential and non-preferential certificate of origin by designated agency. A unique number, UDIN, unique documentation identification number, and a QR code is endorsed on every certificate of origin for validation and authentication by user agency. A preferential and non-preferential certificate क्या होता है? Non-preferential certificate क्या होता है? Like normal certificate, उसमें लिखा हुआ है कि जो goods export हो रहे हैं उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है ड्यूटीज एंड टैरिफ्स के रिगार्डिंग. और प्रेफरेंशियल जिसमें उसको ड्यूटीज एंड टैरिफ्स के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला होता है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स टू EBRC EDPMS. Electronic bank reconciliation certificate has enabled DGFT to capture details of realization of exports proceeds directly from the banks through secured electronic mode. This has facilitated the implementation of various export promotion schemes without any physical interface with the stakeholders. RBI has also developed a comprehensive IT-based system called Export Data Processing and Monitoring System for monitoring of exports of goods and software and facilitating AD banks to report various returns to a single platform. अपन को पता चल गया कि जो सारी रिसिप्ट्स आएंगी एक्सपोर्ट के थ्रू वो एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलिएशन में वो हो जाएगी जमा. और अपन को ये भी पता चल गया कि इससे इम्प्लीमेंटेशन करने में आसान होगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो. अब जो RBI है उसने खुद का एक IT बेस्ड सिस्टम निकाला है, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम. ये फैसिलिटेट करता है AD बैंक्स. AD बैंक्स क्या होते हैं? वो कैटेगरी 1 बैंक्स होते हैं. उनको RBI से लाइसेंस मिला हुआ है टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली. Trade facilitation at custom. CBIC का full form है Central Board of Indirect Taxes and Customs, has undertaken a number of initiatives to facilitate trade. Some of these are follows: 24/7 custom clearance in 20 seaports, 17 airports, and extended clearance in ICDs as per the needs of the trade. Single window in customs, implementation of electronic messages from document clearance to cargo movement, e-Sanchit enabling paperless clearance environment, contactless customs initiatives such as Turant Suvidha Kendra, compliance information portal, direct port delivery on import और direct port entry on exports. Direct port delivery क्या होता है कि जैसे आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे तो वो पहले कस्टम डिपार्टमेंट के पोर्ट में जाएंगे, ऐसा ना होकर वो डायरेक्ट एक कॉमन पोर्ट हो उधर आ जाए जो उधर आ जाए. बस यही है कि थोड़ा पहले कस्टम के पास जाएंगे फिर आपके पोर्ट में जाएंगे तो इससे डिले होता है और एक्सपोर्ट के केस में भी ऐसा ही है. Authorized Economic Operator Program. Authorized Economic Operator Program has been developed by Indian Customs to enable business involved in the international trade to reap the following benefits: secure supply chain from point of export to import, ability to demonstrate compliance with security standards while contracting to supply overseas importers exporters, enhanced border clearance,
privileges and mutual recognition agreements, partner countries, minimal restriction to flow of cargo after security-related disruption, reduction in dwell time and related costs, custom advice assistance if trade faces unexpected issues with customs of countries with which they have a mutual recognition agreement. Towns of export excellence, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का. टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जो टाउन्स में जिसमें पोटेंशियल है वो उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है गवर्नमेंट को, और देखता है कि कितना पोटेंशियल है उनमें एक्सपोर्ट करने का. ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे और उन्हें भी कोई नाम वगैरह दोगे तो उनको भी रिसोर्सेज यूटिलाइज करने का वो मौका मिलेगा, और उन्हें भी लगेगा कि ओके वी हैव सम रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री टू एक्सपोर्ट. So objective क्या है इसका? Development and growth of export production centers. It is necessary to grant recognition to these industrial clusters with a view to maximize their potential and enable them to move up the value chain and also tap new markets. अब किसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बताया जाएगा? मतलब कौन बन सकता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस? Selected towns producing goods of rupees 750 crores or more may be notified as town of export excellence on basis of potential for growth in exports. पर ये लिमिट हैंडलूम, एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर्स के लिए 150 करोड़ हो जाएगी. अदरवाइज अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो गुड 750 करोड़ से ऊपर तो वो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हो जाएगा. ड्यूटी फ्री इंटेलमेंट्स टू सर्टेन सेक्टर्स, इन दोनों सेक्टर्स पे गवर्नमेंट स्पेशल फोकस कर रही है, क्योंकि अपन देखते हैं कि बहुत सारे अपने गुड्स वगैरह जो है स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह है वो चाइना से ही अभी भी इम्पोर्टेड है. तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा है, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट लगा दिया है. मतलब आप इम्पोर्ट कर सकते हो ड्यूटी फ्री कहाँ तक? 1% ऑफ FOB वैल्यू, 1% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट जो आपने प्रीवियस ईयर करी थी. ठीक है, अगर आपने एक्सपोर्ट्स करी थी प्रीवियस ईयर उसका 1% ऑफ FOB वैल्यू अब आप कर सकते हो, मतलब अब आप इंपोर्ट कर सकते हो कस्टम ड्यूटी फ्री. FOB वैल्यू क्या होती है? प्री ऑन बोर्ड वैल्यू. ये क्या होती है? बेसिक प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और जो टैक्सेस लगे माइनस सब्सिडीज अगर कोई मिली है तो. इधर अपन देख सकते हैं कि मरीन प्रोडक्ट की ग्रोथ हो गई है. पहले ये अपन कितना कम एक्सपोर्ट करते थे, अब USD 5 मिलियन का मार्केट था पहले, अब USD 8 बिलियन का मार्केट हो चुका है. 63.03% की ग्रोथ दिख रही है, और आप देख सकते हैं क्वालिटी भी कितनी बढ़ गई है. और ग्रोथ मतलब टॉय सेक्टर में तो, टॉय एक्सपोर्ट में तो 88.54% की ग्रोथ हुई है, और क्वालिटी में भी बहुत इंप्रूवमेंट है. डिजाइन क्वालिटी, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन. कुछ एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं जो बहुत हाई क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिले और वो भी मतलब बिजनेस लीडर के तौर पर आए. इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन देती है. तो अपन देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सर्टिफाइंग सर्टेन एक्सपोर्ट फर्म एज स्टेटस होल्डर इज टू रिकॉग्नाइज सच एक्सपोर्टर फर्म एज बिजनेस लीडर्स हु हैव एक्सेल्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड हैव सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटेड टू कंट्रीज फॉरेन ट्रेड. All exporter of goods, services and technology having an importer-exporter code number on the date of application shall be eligible for recognition as a status holder based on the export performance. An applicant may be categorized as status holder on achieving the threshold export performance in the current and preceding 3 financial year. For gems and jewelry sector, export performance threshold export performance of current and preceding 2 financial years देखी जाएगी. अब अगर अपन देखते हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस उसकी 3 मिलियन है तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 15 है तो 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस वो जब होगा जब उसकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस USD 50 मिलियन होगी. 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 200 USD मिलियन, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 800 USD मिलियन. तो ये क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट इनके बेसिस पे उनको नाम दे देती है, कैटेगराइज कर देती है कि अगर आप इतना एक्सपोर्ट करते हो तो आप 1 आउट एक्सपोर्ट हाउस बन गए, अगर आप 50 कर रहे हो तो आप 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो गए, सॉर्ट ऑफ दैट. अदर कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टेटस, और भी कंडीशन होती है स्टेटस होल्डर को ग्रांट करने के लिए, मतलब स्टेटस सर्टिफिकेशन ग्रांट करने के लिए. एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ 1 status holder shall not be permitted to be transferred to another status holder. Hence, calculation of exports performance based on disclaimer shall not be allowed. Exports made on re-import basis shall not be counted for recognition. Exports of item under authorization, including SCOMET items, would be included for calculation of export performance. तो अपन इधर दो बातों को समझते हैं. तो री एक्सपोर्ट क्या होता है? री एक्सपोर्ट होता है जब अपन गुड्स इंपोर्ट करते हैं और उसको थोड़ा सा वे और मॉडिफाई कर वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है. और स्कॉमेट आइटम्स होते हैं जो डुअल यूज आइटम्स होते हैं. ये सिविलियन में भी यूज हो सकते हैं, मिलिट्री में भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम अपन को घर पे भी काम आता है, और वो आर्म्स बनाने में, वेपन्स एंड आर्म्स बनाने में भी काम आता है. तो ये डुअल यूज आइटम्स हो गए.
अब प्रिविलेजेस क्या क्या मिलेंगे उसको, स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेशन तो मिल गया, उसको प्रिविलेजेस क्या क्या मिलेंगे? सबसे पहले तो उसको उसके कंसाइनमेंट को हैंडल करने पे प्रायोरिटी मिलेगी। 2-स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस और अबव जो होंगे वो अपने वेयर हाउस एस्टैब्लिश कर सकते हैं पोर्ट्स के पास, और सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे उन्हें ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस मिल जाएंगे बहुत आइटम्स को लेकर। तो पढ़ते हैं, ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में बी ग्रांटेड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस. Input output norms may be fixed on priority within 60 days by the norms committee. Special schemes in respect of input output to be notified by DGFT from time to time from specified status for specified status holders. Exemption from furnishing of bank guarantee for schemes under FTP unless specified otherwise anywhere in FTP. 2 stars and above export houses shall be permitted to establish export warehouses as per the Department of Revenue guidelines. The status holders would be entitled to preferential treatment and priority in handling of their consignment by the concerned agency. अब जो स्टेटस होल्डर्स फर्म है उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो और बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें भी डेवलप करने में मदद करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टू इम्प्रूव द ट्रेड इकोसिस्टम बाय एनहांसिंग द अवेलेबल स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, स्टेटस होल्डर्स are being made partners in providing mentoring and training in international trade. Status holder will endeavor to provide to provide skill upgradation training in international trade as detailed below. 2-स्टार एक्सपोर्ट हाउस है तो वो नंबर ऑफ ट्रेनीज कितना हायर कर सकता है ये लिखा हुआ है। 3-स्टार है तो 10 कर सकता है, 4-स्टार है तो 20 कर सकता है, 5-स्टार है तो 50 कर सकता है। इसमें अपन देखते हैं कि 1-स्टार जो एक्सपोर्ट हाउस है वो एक भी नहीं कर सकता। प्लस इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, मतलब किसको हायर कर सकता है, कितनी ड्यूरेशन के लिए हायर कर सकता है, ये सब एक्सपोर्ट हाउसेस के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। और ऑल्सो गवर्नमेंट ने 6 वीक्स का प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम भी पोर्टल पे लगा रखा है। इफ एनीवन वांट्स टू एक्सेस दैट दे कैन डू दैट ऑल्सो। So let's move to our next topic, general provisions regarding imports and exports. हर import और export अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो free माना जाएगा। Export and import shall be free except when regulated by the way of prohibition, restrictions or exclusive trade through state trading enterprises as laid down in Indian Trade Classification Harmonized System. Indian Trade Classification Harmonized System क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जिसमें जैसे इंडिया 8 डिजिट हार्मोनाइज सिस्टम फॉलो करती है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे उनको वो 8 डिजिट कोड दे देती है फॉर आइडेंटिफिकेशन। शेड्यूल 1 में अपनी इंपोर्ट पॉलिसी दे रखी है गुड्स के रिगार्डिंग, और शेड्यूल 2 में अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी दे रखी है। जो शेड्यूल 1 में अपनी इंपोर्ट पॉलिसी दे रखी है वो सिर्फ फर्स्ट हैंड गुड्स को लेकर दे रखी है, सेकेंड हैंड गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शेड्यूल 1 से बाहर है। ITCHS is a compilation of the codes for all the merchandises, goods for exports, imports. Goods are classified based on the group or subgroup at 2, 4, 6, 8 digits. India maintains national harmonized system of goods at 8-digit level, notified under first schedule of the Custom Tariff Act 1975. The import-export policy for all goods are indicated against each item as per the ITC harmonized system. Schedule 1 of ITC harmonized system lays down the import policy design, while Schedule 2 lays down the export policy design. Note: Schedule 1 of ITC harmonized system import policies for new goods are not for second-hand goods. जो भी रूल्स रेगुलेशन अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे लगते हैं वो ही मुतांडिस इंपोर्ट्स पे भी लगेंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स टू और फ्रॉम इंडिया। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या की जरूरत है? बिल ऑफ लेडिंग हो जाए या एयरवे बिल हो जाए, लॉरी बिल हो जाए, रेलवे रिसिप्ट हो जाए या पोस्टल रिसीव हो जाए, इन सब में से कोई भी डॉक्यूमेंट, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अब बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग होता है कि एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर जो अपना जिसने कंसाइनमेंट दिया है उसको ट्रांसपोर्टर इशू करता है कंसाइनमेंट को, और वो बिल बताता है कि कितनी क्वांटिटी शिप हो रही है और वो गुड्स क्या कंटेन करते हैं, कितनी क्वांटिटी है और कौन सी डेस्टिनेशन है जहाँ वो शिप हो रही है। Mandatory documents required for import of goods into India: bill of lading, airway bill, lorry receipt, railway receipt, postal receipt in form CN22, CN23 as the case may be, commercial invoice कम packing list और bill of entry. Bill of entry क्या होता है कि आपने कुछ इंपोर्ट कराया तो ये इंपोर्टर देता है कस्टम क्लियरेंस ऑफिस को। कब देता है? या तो अराइवल से पहले देता है या जब गुड्स अराइव होगा तब दे सकता है। Note: specific goods or category of goods which are subject to any restriction, policy, conditions or require NOC of product specific compliance under any statute, the regulatory authority concerned may notify additional documents for the purpose of export or import.
बेसिकली तो यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पर अगर गवर्नमेंट कुछ अलग से कुछ प्रोडक्ट्स के लिए नोटिफाई करती है कि हमें एडिशनली ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो फिर वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर वो भी मैंडेटरी हो जाएगा। Principles of restrictions. DGFT may through a notification impose prohibition on restriction on export of foodstuff or other essential products for preventing or relieving critical shortages on imports and exports necessary for the application of standards or regulation for the classification, grading or marketing of commodities in international trade. On imports of fishery products imported in any form for enforcement of government measures to restrict production of the domestic product or for certain other purposes. On import to safeguard country's external financial position and to ensure a level of reserves. On imports to provide establishment of a particular industry for protection of human, animal or plant life or health, for protection of public morals and to maintain public order, for the conservation of exhaustible natural resources, for ensuring essential quantities of the domestic processing industry. कुछ आइटम्स गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, जैसे कि एनिमल की स्किन आप ट्रेड नहीं कर सकते, ड्रग नहीं ट्रेड कर सकते, कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप नहीं ट्रेड कर सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की कैटेगरी में आता है। तो अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जिसको आपको ट्रेड करना है, तो आपको गवर्नमेंट से स्पेशल ऑथराइजेशन या परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके थ्रू फिर आप ट्रेड कर सकते हो। Export import of restricted goods or services. Any goods or services, the export or import of which is restricted, may be exported or imported only in accordance with authorization or permission, or in accordance with the procedure prescribed in a notification issued in this regard. Application fee. Government ने application fee बता रखी है, अगर आपको importer exporter कोड चाहिए, registration लेना है, authorization लेना है, तो fee बता रखी है गवर्नमेंट ने अपेंडिक्स 2K में। तो अपेंडिक्स 2K में कुछ फीसेज हैं जो मैंने लास्ट स्लाइड में लिख रखी है। जैसे अगर आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड चाहिए तो वो 500 रुपीज है। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंसेस और कॉमेट आइटम्स, एक्सपोर्ट लाइसेंसेस चाहिए कॉमेट आइटम्स के लिए, फॉर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के लिए तो 1000 रुपीज है। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द कमिटी ने कोई डिसीजन लिया है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको उसको रिव्यू कराना है, तो उसकी फीस है 5000 रुपीज। Clearance of goods from customs against authorization. Goods already imported, shipped, arrived in advance but not cleared from custom may also be cleared against the authorization subsequently issued. आपने कोई गुड्स मंगा दिया, आपके पास ऑथराइजेशन नहीं थी, पर वो आ गए तो फिर आप ऑथराइजेशन ले सकते हो, पर ऐसा आप सिर्फ फ्री गुड्स के केस में कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के केस में नहीं कर सकते। This facility will however be not available to restricted items or items traded through STC unless specifically allowed by DGFT. Penal actions on placing of entity in denied entity list. एंटिटी को गवर्नमेंट डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डाल सकती है। डिनाइड एंटिटी लिस्ट में वो कब जाएगा? अगर उसने कोई पेनल्टी कर दी और उसने पे नहीं करी, अगर उसको कोई प्रिस्क्राइब फी देनी थी टाइम पे, उसने वो फीस नहीं दी। अब बहुत सारी चीजों में और स्कीम्स में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप कितना एक्सपोर्ट वगैरह करते हो, वो आपने इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर दी, अनट्रू है, फॉल्स है। इन सब सर्कमस्टांसेस पे आपको जो गवर्नमेंट है DGFT है वो डिनाइड एंटिटी लिस्ट में आपको प्लेस कर देगी। अब डिनाइड एंटिटी लिस्ट में आप प्लेस हो जाओगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन, रिकॉग्निशन कुछ नहीं मिलेगा, और जो आपके चल रहे थे ना वो भी कैंसिल हो जाएंगे और कुछ नया तो मिलेगा ही नहीं। अब हटेगा कैसे नाम? अगर आपने कोई पेनल्टी वगैरह नहीं पे करी तो उसे पे कर, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिमांड नोटिस में आए हैं जो गवर्नमेंट ने मांगे, अगर उसे आप फर्निश कर देते हो और पेनल्टी वगैरह पे कर देते हो तो फिर आपका नाम डिनाइड एंटिटी लिस्ट में हट जाएगा। Penal actions and placing of an entity in denied entity list. If an authorization holder violates any conditions of such authorization or fails to fulfill export obligation or fails to deposit the requisite amount within the period specified in demand notice issued by the Department of Revenue and or DGFT, he shall be liable for actions in accordance with FT Act. The rules and orders made thereunder, FT and any other law for the time being enforced. With a view to raising ethical standard and for ease of doing business, DGFT has provided for self-certification scheme under various schemes. In such cases, applicants shall undertake self-certification with sufficient care and caution in filling up information particulars. Any information particular subsequently found untrue, incorrect will be liable for action under
FT Act 1992. On issuance of such an order for reasons to be recorded in writing, a firm may be refused to grant status or renewal of a license, authorization, certificate, scrip, or any instrument bestowing financial or fiscal benefits. If a firm is placed under denial entity list, all new licenses, authorizations, scripts, certificates, instrument will be blocked from printing, issue, and renewal. A firm's name can be removed from denial entity list by the concerned registered authority for reasons to be recorded in writing. If a firm completes export obligation, pays penalty, fulfills the requirement of demand notice issued by the registered authority, submits documents required by the IRA, तो उसका फिर नाम है ना denial entity list से हट जाएगा. अगर वो वैसा बोल देती है जिसका जैसा उसको नोटिस आया है उन सबको अगर वो कंप्लाई कर लेती है तो फिर उसका नाम हट जाएगा denial entity list से. अब गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कहाँ पे, ये सिर्फ एग्जांपल्स है कि कहाँ पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता. The import export of arms and related materials to Iraq is prohibited. However, exports of arms and related material to government of Iraq shall be permitted subject to no objection certificate from the Department of Defense Production. Trade in oil and refined oil products, modular refineries and related materials beside items of cultural including antiques, scientific and research, religious important are prohibited within the Islamic state in Iraq. Direct and indirect import of charcoal is prohibited from Somalia, irrespective of whether or not such charcoal has originated in Somalia. Transition facility, transaction of goods through or from India, countries existing to India, मतलब जो भी अपने ट्रांजैक्शन होंगे ना दूसरी कंट्रीज के साथ, वो जो ट्रीटीज बोल रही है उनके अकॉर्डिंग ही होंगे. Imports of gifts. Import of goods, including those purchased from e-commerce portal through post or courier, where custom clearance sort of gift is prohibited except for life-saving drugs, medicines, Rakhi, but not gifts related to Rakhi. अब import through passenger baggage. Import कर सकते हो passenger baggage के through. Suppose आप passenger baggage में क्या-क्या ला सकते हो? Import passenger baggage के through तो allowed है, पर कुछ specified quantity है, उससे exceed नहीं होना चाहिए. क्या-क्या ला सकते हो आप passenger baggage के through? Household goods, personal effects, samples of such items that are otherwise freely importable under FT. ऐसा ना हो आप ड्रग्स बढ़कर ला रहे हो बैग में, ऐसा नहीं, वो तो रिस्ट्रिक्टेड है. जो फ्रीली अवेलेबल, जो फ्रीली इंपोर्टेबल गुड्स हैं उसका आप सैंपल ला सकते हो. एक्सपोर्टर्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड आर आल्सो अलाउड टू इंपोर्ट ड्राइंग्स, पैटर्न्स, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export. All items of passenger baggage should not exceed the limit specified. मतलब कोई लिमिट को वो एक्सीड नहीं करना चाहिए. अगर वो लिमिट को एक्सीड करेगा तो फिर आपको ऑथराइजेशन और वो लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के थ्रू. अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप ला सकते हो. अब सपोज करो आपके कोई गुड्स थे जो आपने इंपोर्ट करे, वो खराब हो गए, फिर आपने वापस दे दिए कि भाई बाहर से सही होकर आ जाएंगे, ये मतलब जहाँ से इंपोर्ट होता है आपने उसको ही दे दिए कि सही कर वापस इंपोर्ट कर देना. तो उन गुड्स के लिए सब्सिक्वेंट ऑथराइजेशन नहीं चाहिए. Capital goods, equipment, components, parts, and accessories which imported or indigenous except those restricted under ITCHS may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement, or upgradation or standardization of technology and re-imported without an authorization. Import of prototype. आप प्रोटोटाइप इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एजेंसीज को बोल रखा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में वो इन्वॉल्व हो और आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस है कि आप प्रोटोटाइप इंपोर्ट कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो. Import of new second-hand prototypes, second-hand samples may be allowed on payment of duty without an authorization to the actual user, industrial engaged in production or having industrial license, letter of intent for research in item for which prototype is sought for product development or research. Other provisions related to imports. No specific permission of DGFT is required for import of these financial capital goods. Wherever any duty-free import is allowed or where otherwise specified stated, importer shall execute legal undertaking, LUT, ban guarantee bond with custom authority as prescribed before clearance of goods. Sale of goods on high sea for import into India may be subject to FTP or any other law being enforced. Non-realization of export proceeds. कोई एक्सपोर्टर था अपन इसको समझते हैं, कोई एक्सपोर्टर था, उसने एक्सपोर्ट कर दिया, एक RBI प्रिस्क्राइब टाइम देती है जब तक एक्सपोर्टर को पेमेंट रियलाइज हो जानी चाहिए. अगर वो तब तक रियलाइजेशन नहीं होती है एक्सपोर्टर, मतलब एक्सपोर्टर को तब तक पेमेंट नहीं मिलती है, तो उसके साथ क्या होगा, मतलब जो भी उसको स्कीम्स का बेनिफिट मिला था वो सब गवर्नमेंट उससे वापस ले लेगी.
If an exporter fails to realize export proceeds within the time specified by RBI, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law in force, be liable to return all the benefits, incentives available against such exports and action in accordance with provisions of FT rules and orders made thereunder and the FTP. In case an exporter is unable to realize the export proceed for the reason behind his control, force majeure, he may approach RBI for writing off the unrealized amount. इस केस में क्या है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों के पर्व्यू से बाहर है कि वो पेमेंट कर दे. सपोज सिचुएशन हो गई कोई वॉर टाइप, तो इसमें इंपोर्टर पेमेंट ही नहीं कर सकता. इस केस में एक्सपोर्टर आरबीआई को अप्रोच कर सकता है फॉर राइटिंग ऑफ द अनरियलाइज्ड अमाउंट. द पेमेंट रियलाइज्ड टू इंश्योरेंस कवर्ड वुड बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर एसटीपी. एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी. एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज का क्या काम है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज फैसिलिटेट करती है एक्सपोर्टर्स को, सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर्स को और गारंटी देती है एक्सपोर्टर्स के बिहाफ पे. और अगर उनका कहीं डिफॉल्ट हो जाता है तो वो उसके लॉसेस का भी मतलब अगर कोई लॉस वगैरह हो जाता है तो वो उसको भी बेयर करती है. Export credit agencies are the policy instrument for government to support export. Export credit agencies support exporters by insurance, guarantee, and also direct lending. Export credit agencies like Export Credit Guarantee Corporation of India provides credit insurance support to exporters and export credit lending. Covers issued by the ECGC to exporters protect against losses arising out of payment failure due to insolvency or default of the buyers due to political risk. ECGC indemnifies loss of exporters and in export trade due to insolvency or default of the buyer. Additional losses due to political risk like war, sudden import restriction, promulgation of law or decree of after the shipment has been affected are also covered. So let's move to my last topic, developing district as export hub. गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब के अंडर लाया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्युनिटीज बनाई है ताकि जो डिस्ट्रिक्ट्स के एक्सपोर्ट्स हैं उन पे बढ़ावा मिल सके, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे फोकस हो सके. हर डिस्ट्रिक्ट्स के जो 2-3 बेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे जयपुर का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, तो जो जयपुर का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है, उसको हैंडीक्राफ्ट और 2-3 जो मेजर आइटम्स हैं उसको एक्सपोर्ट करने में और उसका एक्सपोर्ट कैसे बढ़े इस सब चीजों में सोचना चाहिए. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गैल्वेनाइज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू बिकम एक्सपोर्ट हब्स बाय आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द डिस्ट्रिक्ट, addressing bottlenecks for exporting these products and services, support local exporters, manufacturers to scale and find potential buyers outside India with the aim of promoting exports, manufacturing and service industry in the district. ये क्या करेगा? ये एमएसएमई को भी एम्पावर करेगा और फार्मर्स को भी एम्पावर करेगा कि वो पार्ट टाइम कुछ और लेकर उसको एक्सपोर्ट करें. This decentralized and focused approach will shift the focus on district lead export growth for self-sufficiency and self-reliance by providing global platform to products and services from the district. तो इसमें क्या होगा कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का काम क्या होगा कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के 2-3 मेन प्रोडक्ट्स देखे जो इस पे वो स्पेशलाइजेशन, जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है, मतलब जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट की एक्सपर्टीज है, और फिर उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में, मतलब उसके एक्सपोर्ट बढ़ाने में ध्यान दे. Every district has products and services which are being exported and can further be promoted along with new products, services to increase production, grow exports, generate economic activity and achieve the goal of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and made in India. Each district shall constitute a district export promotion committee chaired by collector, DM or DC of the district and co-chaired by designated DGFT, regional authorities, with various other stakeholders as its members. डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाएगी. एक्शन प्लान में वो क्या करेगी? 2-3 हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेगी अपने डिस्ट्रिक्ट से, जिसको वो प्रायोरिटाइज करेगी और उसका ग्रोथ प्लान बनाएगी. अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन गई और एक स्टेट लेवल पे भी बनेगी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, जिसका हेड कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ठीक है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ डिजिटल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान. डीजीएफटी ने एक ऑनलाइन सिस्टम और बनाया है जहाँ पे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो अपना एक्सपोर्ट प्लान डाल सकते हैं ताकि जो पब्लिक है, ताकि डीजीएफटी को पता रहे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स का क्या क्या फेमस है और क्या क्या एक्सपोर्ट करने में और क्या उनका प्लान है, मतलब किस पे डिस्ट्रिक्ट का कमिटी फोकस करिए कि क्या इंक्रीज करना है. प्लस जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई हमारी डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है और किसके एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो वो भी फिर उस फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में
आ सकते हैं. Online monitoring of district export action plan. DGFT would require an online monitoring portal that may be accessed on the DGFT website to enable the state's DGFT RA to upload all information related to products, services with export potential of every district. The portal may also help in monitoring of progress of district export action plan (DEPC) meetings in all the districts. The information and reports may also be available in public domain for the benefit of the exporters. Export promotion activities in district. जो district export promotional committee वगैरह जो बननी है, उसका मोटिव होना चाहिए कि वो exports को बढ़ाए. तो उसके लिए उसको export promotional activities conduct करानी चाहिए district में, जैसे buyer seller meet हो गई, exhibitions हो गई, trade fairs हो गए, ताकि जो district की products है वो दुनिया तक पहुंच पाए, मतलब वो international level पे लेकर जाया जा सके. The training and development needs of district industries may be identified and training may be coordinated with other departments. DGFT and regional authorities through DEPC may facilitate such buyer-seller meet, exhibition, trade fairs, etc. in the district to encourage the industries to show their product services to the world. Implementation of district export action plan. It may include identifying bottlenecks, issues in GI production, registration, marketing, and its export. The plan may also include the support required by the local industry in boosting their manufacturing and export with the impetus on supporting the industry from the production stage to the exporting stage. Once the plan is formally adopted by the DEPC of each district, the plan may be implemented by the DEPC by identifying the project activities required to be done to promote export growth from the district. मतलब कौन-कौन सी activities है, जैसे कौन-कौन से goods उन्होंने identify करे, क्या-क्या bottlenecks हो रहे हैं, क्या-क्या चीजें किस चीज में हम lag behind कर रहे हैं, उसके regarding एक अच्छा सा plan बनाए ताकि अपन उस export को increase कर सके. Conversions of various schemes would be done on priority to build synergy and access the central government and state government schemes, funds available for infrastructure development and skill capacity building development. Department of Commerce schemes such as Market Access Initiative, Neerat Bandhu schemes may also give priority to district specific needs. अगर किसी district को लग रहा है कि उसको किसी की जरूरत है तो DGFT बहुत सारी स्कीम्स वगैरह निकालता है, उसके अंडर वो अपने एक्सपोर्टर्स को रजिस्टर कर सकती है, जैसे नीरज बंधु स्कीम हो गई, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम हो गई. अपन इसमें देख सकते हैं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस, जैसे फरीदाबाद का अपैरल बहुत फेमस है, मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, मिर्जापुर का हैंडमेड कारपेट एंड दरी बहुत फेमस है. तो इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब इसकी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशनल कमिटीज है, उन सबको इन आइटम्स पे फोकस करने पे ध्यान देना चाहिए कि इन सबका अपन एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या-क्या लूप होल्स आ रहे हैं, उसमें मदद लेनी चाहिए स्टेट की और फिर सेंट्रल लेवल की, मतलब DGFT. So that brings us to the end of my presentation. I would like to invite Prateek to continue further. Thank you. Thank you. Very well explained. Let's continue. Thank you. Hello everyone. Continuing from where Kusum has left, let's discuss about duty exemption and remission scheme. What are the objectives of this scheme? Duty exemption scheme enables duty-free import of inputs for export production. An advance license is issued as a duty exemption scheme. What are the schemes covered under this chapter? Advance authorization scheme, duty-free import authorization, duty drawback scheme administered by the Department of Revenue, schemes for rebate on state and central taxes and levies as notified by the Ministry of Textiles, schemes for remission of duties and taxes on export products, ROTEP, notified by the Department of Commerce and administered by the Department of Revenue. First, advance authorization scheme. Advance authorization scheme enables exporters to get duty-free import of raw materials, which are to be used in the production of products which are exported. चलते रहते हैं. तो इन सब को क्या है कि पीछे एक टीम तैयार कर रखी है बच्चों की. तो बच्चे जैसे आज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, 3 बच्चों को दे दिया कि आपको पूरा थ्रेड पे डिस्कशन करना है और एक क्लॉज इसको करना है. तो करीब 2-2.5 घंटे तक ये डिस्कशन चलता है हमारा. ठीक है, बीच में इनिशियल रिमार्क्स मैंने डाल दिए, कुछ कर दिए, बट बच्चे उसको थ्रेड पे पूरा डिस्कस करते हैं. तो वो क्या एक नॉलेज बेस बन जाता है अपने, और कहीं ना कहीं इसका वापस अपने को रिवर्ट
ठीक है, अपन बच्चों की grooming का भी काम करते हैं. Hello everyone, let's restart. Yes, continue. Continue from where Kusum has left. Duty exemptions and remission scheme. Objective of this scheme are duty exemption scheme enable duty-free import of input for export production. An advance license is issued as a duty exemption scheme. What are the schemes covered under this chapter are advance authorization scheme, duty-free import authorization, duty drawback scheme administered by Department of Revenue, schemes for rebate on state and central taxes and levies, schemes for remission of duties and taxes on export products, road tax notified by the Department of Commerce and administered by the Department of Revenue. First, advance authorization scheme. Advance authorization scheme enables exporters to get duty-free import of raw materials which are to be used in production of that product which are to be exported. Basis for issue of advance authorization. It is issued as per standard input-output norm or on the basis of self-declaration or applicant-specific prior fixation of norms or on the basis of self-ratification. Who are the eligible applicants, eligible export and eligible supply under this advance authorization? Advance authorization can be issued either to a manufacturer exporter or a merchant exporter tied to a supporting manufacturer. In case of pharmaceutical products, it is issued to a manufacturer exporter only. Advance authorization shall be issued for physical export, including export to SEZ, intermediate supply, or supply of goods to specified categories of deemed export, supply is stored on board of foreign going vessels, aircraft, subject to conditions that there is a specific standard input-output norms in respect of items supplied. Self-ratification scheme. When there is no SION, valid ad hoc norm for an export product, or where SION norms has been notified, but exporter intends to use additional input in manufacturing process, eligible exporters can apply for an advance authorization under this scheme on self-declaration or self-ratification basis. Application under this scheme shall be made along with a certificate from a chartered engineer in the prescribed format. A certificate from chartered engineer who is not been penalized in last 5 years under Foreign Trade Development and Regulation Act 1992, Custom Act 1962, Central Excise Act 1944, GST Act and Allied Act and rule made thereunder shall only be accepted for grant of authorization under this scheme. Who are the eligible exporters for self-ratification scheme? An exporter, manufacturer or merchant who holds AEO certificate, authorized economic operator certificate under common accreditation program of CBEC is eligible to opt for this scheme. A status holder who is a manufacturer come actual user and holds valid 2-star or above status and who has already submitted its application for grant of AEO on CBIC's AEO portal is also eligible to apply for this scheme. Conditions to be fulfilled by the status holder for self-ratification scheme. A status holder submit copy of numbered and dated acknowledgement of its application for grant of AEO. The status holder undertake to DGFT that their application for grant of AEO certification has not yet been rejected. There is no case of infringement of custom and allied laws against the status holder in current year and last 3 financial years. The status holder has not been issued show cause notice by customs or GST authorities in current year and last 3 financial years. Status holder has positive net current assets. There is no insolvency, bankruptcy or liquidation proceedings taken against the status holder in current year and last 3 financial years. If the status holder is unable to obtain AEU certification within 120 days from the date of application under this scheme para, the exporter agrees that the facility under this para shall stand withdrawn and he will be bound to approach the concerned norm committee of DGFT for fixation of norms and to abide by decisions of the said committee. In case of situation above, no further authorization under this scheme will be issued. DGFT may deny authorization under this scheme para to 2-star or above status holders based on its risk management principles. Status holders shall be audited by the DGFT as laid down in Handbook of Procedures. What are the ineligible products under the self advance authorization scheme?
all vegetables, edible oils classified under Chapter 15 and all types of oilseeds classified under Chapter 12 of ITC based on harmonized system rules. All type of cereals classified under Chapter 10 of ITC, horn, hoof, and any other organs of animals, wild animal products, organs, and waste thereof, honey, all items with basic custom duty of more than 30%. All types of fruits, nuts, vegetables classified under Chapter 7 and Chapter 8 of ITC based on Pharma System Book. Acetic anhydride, ephedrine, pseudoephedrine, vitamins, biotechnological items and related products, insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products, and plant growth regulators, disinfectants and similar products, and all forms, types and grades, all types of waste and scrap and second-hand goods. Advance authorization for annual requirement. It shall be issued only for items notified under SIO norms. It shall not issued for items notified under SI norms if that items is appear in Appendix 4. Exporters must have past export performance of at least 3 preceding 2 financial years. We have to export up to 300% of FOB value of physical exports and or FOR value of deemed export in the preceding financial year or rupees 1 crore. Minimum value addition under advance authorization scheme is minimum value addition required to be achieved under advance authorization is 15%. But in case of tea, minimum value addition will be 50%. In case of spices, it will be 25%. In case of plain jewelry, it will be 3%. And in case of studded gold, silver, platinum jewelry, it will be 6%. What are the duties exempted under advance authorization scheme? Basic custom duty, additional custom duty, education sales, anti-dumping duty, countervailing duty, safeguard duty, transition product, specified safeguard duty wherever applicable, integrated tax, compensation sales leviable under subsection 7 and subsection 9 of section 3 Custom Tariff Act 1975. Duty-free import authorization scheme DFI. Duty-free import authorization is issued to allow duty-free import of imports. In addition, import of oil and catalyst which is consumed utilized in the process of production of export products may also be allowed. Import of tire under DFI scheme is not allowed. Only basic custom duty under DFI scheme is allowed. Duty-free import authorization shall be issued on post-export basis for products which standard input-output norms have been notified. Merchant exporters shall be required to mention name and address of supporting manufacturers of export products on export documents like shipping bill, bill of export, tax invoice for export, prescribed under GST rules. Application is to be filed with concerned regional authority before effecting export under duty-free import authorization. Minimum value addition of 20% is to be achieved under DFIA scheme. Road tax. Remission of duties and taxes on exported products. The objective of government under road tax is to refund currently unrefunded duties, taxes, levies at central, state and local level borne on exported products. जैसे कि मशीन्स है वो यूज हो रही है उसमें हम ऑयल यूज कर रहे हैं तो उन पे जो ड्यूटीज लगती है उनका किसी भी तरीके से एक्सपोर्टर को रिफंड नहीं मिलता. इलेक्ट्रिसिटी है उस पर जो ड्यूटीज लगती है उस तरीके उसको किसी भी तरीके से उस पर रिफंड नहीं मिलता. तो गवर्नमेंट का यहाँ पे है कि ऐसी ड्यूटी जिसपे किसी भी तरीके से रिफंड नहीं मिलता उनको एक्सपोर्टर्स को रिफंड करना. Principles and features of road tax. The rebate under road tax shall not be available in respect of duties and taxes already exempted. जैसे कि अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम या फिर जीपीसीसी स्कीम में अगर ड्यूटीज का एग्जेम्पशन ले लिया तो फिर आपको रोड टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. Government decided to extend the benefit of road tax scheme to all goods with effect from 1st January 2021. Road tax scheme support will be provided to eligible exporters at notified rate as percentage of FOB value. The road tax on certain export products will also be subject to a value cap per unit of export product. It will be implemented by custom simplified IT system. Rebate will be issued in the form of transferable duty credit, e-script, which will be data of which will be maintained by the electronic ledger by Central Board of Indirect Taxes and Customs. Employment-oriented sectors like marine, agriculture, leather, gems, and jewelry are covered under the scheme. Other segments like automobile, plastic, electronic machinery are also getting support under road tax scheme. Certain categories which would not avail the benefit include export goods that are subject to minimum export price, restricted and prohibited items, deemed export,
supplies of goods manufactured by domestic tariff area, Unit 2 SEZs, and products manufactured or exported by units situated in the special economic zone. Moving further, export promotion capital goods scheme. Export promotion capital goods scheme allow import of capital goods for pre-production, production, and post-production at zero custom duty. Capital goods imported under EPCG authorization for physical export are also exempt from IGST and compensation tax. What are the capital goods included under this foreign trade policy? Any plant, machinery, equipment, or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services. Computer systems and software which are part of capital goods being imported. जैसे कि fully digitalized machine है जो किसी सॉफ्टवेयर से चलती तो वो भी सॉफ्टवेयर भी कैपिटल गुड का पार्ट फॉर्म करेगा. Spares, molds, dies, jigs, fixtures, tools and refactories, and catalyst for initial charge plus one subsequent charge. Export obligation. Under EPCG authorization EPCG scheme, exporters have to oblige export obligation. Import under EPCG scheme shall be subject to an export obligation equivalent to 6 times of duties, taxes, and sales saved on capital goods to be fulfilled in 6 years, which will be calculated from the date of issue of authorization. Import procurement under EPCG scheme shall also be subject to average export obligation. For example, Mr. X imported machine from USA rupees 10 crore, custom duty and sales rupees 2 crore, IGST rupees 3 crore. In case under EPCG scheme, Mr. X does not require to pay rupees 5 crore as taxes and sales, and he have to export 30 crore, that is 5 crore multiplied by 6 times in 6 years from the date of issue of license. What if the exporter want to pay taxes in cash? In case integrated tax and compensation are paid in cash on import under EPCG incidences of state, integrated tax and compensation would not be taken for computation of net duty saved provided input tax credit is not available. For example, Mr. X imported machine from USA rupees 10 crore, custom duty and sales rupees 2 crore, IGST rupees 3 crore. In this case, if Mr. X paid IGST to government, then he is only required to export up to rupees 12 crore, that is 2 crore multiplied by 6 times. Is export obligation in next 6 years. Condition is that he had not availed ITC on that machine. Import of restricted items. Import of items which are restricted for import shall be permitted under EPCG scheme only after approval from TAXI Facilitation Committee at DGF headquarters. If the goods proposed to be exported under EPCG authorization are restricted for export, the EPCG authorization shall be issued only after approval for issuance of export authorization from Exim Facilitation Committee at DGF headquarters. Valid authorization shall be valid for import for 24 months, which was 18 months in the previous policy. From the date of issue of authorization, revalidation of EPCG authorization shall not be permitted. Who are the exporters covered under the EPCG scheme? Manufacturer exporters with or without supporting manufacturers, merchant exporters tied to supporting manufacturers, and service providers. It also covers a service provider who is a common service provider certified by the DGFT, Department of Commerce in a DE or PM Mitra. Conditions for CHP. Common utility services like providing electricity, water, gas, sanitation, beverages, telecommunication, transportation shall not consider for the benefit of CHP. Export by users of common services shall be counted toward fulfillment of EO of CSP. Such exports will not be counted toward fulfillment of specific export obligation in respect of other EPCG authorization of the user. Capital goods should be installed in TE or PM Mitra. Average export obligation. Under EPCG authorization, EPCG scheme, exporters not only required to fulfill specific export obligation, but he is also to maintain average export obligation. Average export obligations would be arithmetic mean of export performance in the preceding 3 licensing years for 10 and similar products. The average export obligation shall be fulfilled every financial year till export obligation is completed. It means अगर आपने specific export obligation को fulfill कर लिया और average export obligation को fulfill नहीं किया तो specific export obligation count नहीं होगा. For example, Mr. X is applied for EPCG in April 2023. His turnover is as follows: 2021 10 crore, 2021-22 15 crore, and 22-23 20 crore. In the above case, average turnover for preceding last 3 years is 15 crore, and Mr. X has to maintain export turnover of rupees 15 crore every year till export obligation is completed. Conditions to be fulfilled for fulfillment of export obligation. Export obligation
shall be fulfilled by the authorization holder through export of goods and/or services. Export obligation under the scheme shall be over and above the average level of export achieved by the applicant. It means we have to maintain average export obligation and specific export obligation both. Export obligation may be fulfilled both by physical export as well as deemed export. Export made from DT unit shall only be counted for calculation and of fulfillment of average export obligation or export obligation. There are some benefits from which anyone benefit can be taken. In case of indigenous sourcing of capital goods, specific EO shall be 25% less than EO stipulated. If authorization holder fulfills 75% or more of export obligation along with average export obligation in 3 years or less, then the remaining obligation shall be condoned. For exporters of green technology, product specific EO shall be 75% of EO. For manufacturing unit located in northeast region and unit territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, EO shall only be 25%. There are some manufacturers who does not require to maintain average export obligation, which are as follows: handicraft exporters, handloom exporters, industries covered under Khadi and Village Industries Commission, agriculture, aquaculture, pisciculture, animal husbandry and dairy, floriculture, poultry, viticulture, sericulture, carpet, forestry. However, this exemption from maintenance of average export obligation shall not be allowed for import of fishing trawlers, boats, ships, and other similar items. Moving further, discuss about export-oriented units, electronic hardware technological parks, software technological parks, and biotechnological technological parks. Units undertaking to export their entire production of goods and services, except permissible sales in domestic tariff area, may be set up under EOU scheme, ESTP scheme, STP, and BATP. Trading units are not covered under these schemes. Objective of this scheme are to promote exports, enhance foreign exchange earnings, attract investment for export production and employment generation. What are the goods that can be exported and exported and imported under EOU, ESTP, STP, and BTP? They can export or import all kinds of goods and services except items that are prohibited in ITC based on HL. In case of gold, only 8 to 22 carat of export is permitted. Export of instruments shall be subject to fulfillment of conditions mentioned in Chapter 10, which will be further discussed by my co-presenter Yajawar. Export promotion materials can be, like brochures, procured and supplied up to 1.5% of FOB value of previous year's exports. State ready design shall not apply to EOU manufacturing units. Gems and jewelry, EOUs may sold gold, silver, platinum to nominated agencies who own loan or outright purchase basis. Net foreign exchange earnings. EOU, ESTP, STP, or BTP units shall be a positive net foreign exchange earnings. NAP earnings shall be calculated cumulatively in block of 5 years, starting from the commencement of production. Wherever unit is unable to achieve NAP due to prohibition, restriction imposed on export of any product mentioned in LOP, the 5-year block period for calculation of NAP earnings may be suitably extended by board of approval. If unit is unable to achieve NAP due to adverse market conditions, 5-year block can be extended up to 1 year by POF. Application EOU और ESTP, BTP या STP किसको necessary applications देंगी और उनको किन किन से अप्रोच मिलेंगे उनके बारे में बात करते हैं. Application for setting up an EOU shall be considered by unit approval committee या फिर board of approval committee as the case may be. In case of electronic hardware technological park या software technological park scheme, necessary approvals permission shall be granted by the officer designated by Ministry of Electronic and Information Technology instead of Development Commissioner and by Interministerial Standing Committee instead of Board of Approval. In case of BTP, approval and permission shall be granted by the designated officer of Department of Biotechnology. On approval, letter of permission and letter of intent shall be used. इसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से गुड्स इंपोर्ट हो सकते हैं और क्या क्या इनको बेनिफिट मिलेंगे. What are the investment criteria for EOU? Only projects having minimum investment of rupees 1 crore in plant and machinery shall be considered for establishment as EOU. This shall not be applied to existing units in ESTP, STP, BTP, and EOU in handicraft, agriculture, floriculture, aquaculture,
animal husbandry, information technology services, brass hardware, and handmade jewelry sector. BOA may allow establishment of UUs with lower investment criteria. Other supplies counted for fulfillment of NAP. Supplies effected in DTA to holder of advance authorization for annual requirements, DFI under duty exemption remission scheme will be counted for fulfillment of NAP. Supply effected in DTA against foreign exchange, remittance received from overseas, supplies to other EOU, ESTP, STP, BTP, या SEZ units, supply items like tags, labels, printed bags, stickers, belts, buttons, or hangers to DT unit for export, supply of LPG to public sector domestic oil companies for supply to household domestic consumers. Not only supply of such quantity of LPG would be eligible for ministry, for which Ministry of Petroleum and Natural Gas declines permissions for export. Entitlement for supplies from DTA. Supplies from DTA to EOU, ESTP, STP, BTP units for use in the manufacture or for export will be eligible for benefit of deemed export of foreign trade policy. The refund of GST paid on such supplies from DTA to EOU would be available to suppliers subject to such conditions and documentation as is specified under GST rules and notifications issued thereunder. EOU, ESTP, STP, BTP units shall be entitled to reimbursement of central sales tax on goods manufactured in India wherever applicable. In case 6% per annum simple interest will be payable on delay in refund of CST if the case is not settled within 30 days from the receipt of complete application. Sale of unutilized material and capital goods. जितना आपने इंपोर्ट किया है अगर उसमें से कुछ रॉ मटेरियल बच गया तो उसके रिगार्डिंग EOU, ESTP, STP units can transfer to unutilized material to another EOU, ESTP, STP, BTP or SEZ units. Disposed of in a DTA with intimation to custom authorities on payment of applicable duties and or taxes and compensation sales. Exemptions of custom duties at the time of import will also be payable. जिस जो आपने import पे raw material के import पे जो आपने benefit लिए हैं उसको आपको पे करना पड़ेगा. Unutilized material को आप पूरा export भी कर सकते हो. एक EOU से दूसरे EOU को जो material transfer होगा तो दूसरे EOU के लिए वो import होगा. In case of textile sectors, disposal of leftover material, fabrics up to 2% of CF value or quantity of import whichever is lower on payment of duty on transaction value may be allowed, subject to certification of central excise custom officers that these are leftover items. Disposal of used packing material will be allowed on payment of duty on transaction value. Export to exhibitions, export promotion to showrooms abroad, duty free shops. ESTP, BTP, STP units are permitted to export goods for holding, participating in exhibitions abroad with permissions of Development Commissioner designated officer. Export goods for display, sale in permitted shops set up abroad. Display, sale in permitted shops set up abroad or in showrooms of their distributors, agents, or set up showrooms, retail outlets, and international airports. Further topic will be discussed by my co-presenter Yash Jawar. The speed is little bit faster, but is requirement due to the time constraint, but very well explained and good examples also given by you for the to understand your points. Thank you very much. Thank you. Let's continue further. Deem export referred to Please continue. Thank you.
Deem exports refer to transactions in which goods are supplied do not leave the countries, and the payment for which supplies are received either in Indian rupees or in free foreign exchange. Deem exports जो है जीएसटी के सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 147 के अंदर रेफर किया गया है, जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल को पावर दी गई है कि वो नोटिफाई कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को जो डीम एक्सपोर्ट्स के अंदर कवर होंगे. तो एज पर नोटिफिकेशन 48 डेटेड 18th of October 2017 कुछ सप्लाईज नोटिफाई की गई थी जो डीम एक्सपोर्ट्स के अंदर कवर होंगी. The supplies were as follows: supply of goods by a registered person against advance authorization. Second supply was supply of capital goods by a registered person against EPCG scheme, जो कि प्रतीक ने explain की थी. And third was supply of goods by a registered person to EUU. Fourth supply was supply of goods by bank or public sector undertaking specified in the notification number 50/2017, custom dated 30th June 2017 against advance authorization scheme. जो कैटेगरीज ऑफ सप्लाई डीम एक्सपोर्ट्स के अंदर स्पेसिफाइड है, ये कवर करती है सप्लाईज जो कि मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई करी है, या फिर सप्लाईज जो कि मेन कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर ने डायरेक्ट जो पोर्ट है या फिर जो यूनिट है जिसमें प्रोजेक्ट बन रहा है उसको सप्लाई की गई है. लेटर सेक्शन में मैंने ये भी स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं जो कि इंडियन सब कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करता है और उसका पेमेंट मेन कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली सब कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करता है, तो वो सप्लाईज भी एक्सपोर्ट्स का पार्ट बन सकते हैं. What are the supplies by the manufacturer covered under deem exports? First is supply of goods against advance authorization. Second, supply of goods to EUU, STP, EHTP, and biological technical part (BTP). C is supply of capital goods against EPCG authorization. Now, what are the supplies by the main and subcontractors which are covered under deem exports? These are as follows: supply of goods to project financed by multilateral or bilateral agencies, funds as notified by Department of Economic Affairs (MOF), where legal agreements provide for tender evaluation without including custom duties, and supplies and installation of goods and equipment to project financed by multilateral or bilateral agencies, funds as notified by Department of Economic Affairs, for which bids have been invited and evaluated on the basis of delivered duty paid prices for the goods manufactured abroad. Clause E specifies supply of goods to any project or for any purpose in respect of which the Ministry of Finance by the custom notification number 50/2017 dated 30th June 2017 is specified. Clause number F specifies supply of goods to United Nations or international organizations for their official use or supply to the project financed by the said United Nations or an international organization approved by Government of India. Clause number G specifies supply of goods to nuclear power projects. So these are the supplies which are majorly covered, notified by the FTP and to be covered under deem exports. What are the benefits of deem exports? Under deem exports, advance authorization for annual requirements, and DFI scheme benefits can be availed. Second is deem export duty drawback is also allowed to the deem exports. जो भी अपन ने import duty के equal जो पे किया है किसी भी सप्लाई में जो यूज में मैन्युफैक्चर करने में गुड्स को जो कि सप्लाई हो रही डीम एक्सपोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर भी ड्रॉबैक आपको मिल सकता है. थर्ड इज रिफंड ऑफ टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी फॉर एक्साइजेबल गुड्स मेंशन्ड इन शेड्यूल 4 ऑफ द सेंट्रल एक्साइजेस 1944. Now, what are the common conditions for deem exports? Supplies must be made directly to entities listed previously in categories of supplier. Second is supplies shall be made directly to the designated projects, agencies, units, advance authorization, EPGC's authorization holder. Subcontractors may make supplies to main contractors. Payment in such cases shall be made to subcontractors by the main contractor and not by project authority. जैसे मैंने पहले बता रखा था. Second is liability of interest. कस्टम एक्ट 1962 के अंदर एक सेक्शन है 75 जो कि क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि जिस डेट से आपको कस्टम पेबल होता है, ड्रॉबैक पेबल होता है, अगर उसके 1 मंथ के अंदर आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट एट रेट 6% पर एनम फ्रॉम द टाइम जब आपको ड्रॉबैक पे करना है और जब तक पे हुआ है उसकी रेट से पे होता है. अगर 1 मंथ के बाद वो पे होता है 31st डे से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट चैप्टर कवर्स क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो कि एक इंडियन से जो कि एक इंडियन एक्सपोर्टर है, तो मिस्टर बी जो कि एक फॉरेन सप्लाई जो कि फॉरेन परचेजर है उनको गुड सप्लाई करता है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के रिगार्डिंग होता है. स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से गुड्स नहीं बनता है पर फिर भी वो एक्सपोर्ट हो जाता है सप्लायर को, पेमेंट रिसीव हो जाती है. तो उसके बाद अगर वो स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं कर रहा तो जो फॉरेन परचेजर है उसके लिए किसी यूज का नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, किसको कंप्लेन करेगा? क्योंकि जो फॉरेन ट्रांजेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये डिसाइड करना होता है कि कौन से जो रूल्स है फॉरेन कंट्री के रूल्स या हमारे रूल्स कौन सी अथॉरिटी डिजाइन गवर्न करेगी, कौन ओवरराइड करेगी, किसके सैंक्शंस यहाँ पे चलेंगे, इसके रूल्स के हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे.
तो इसको एड्रेस करते हुए कुछ ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स के, जिसको ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर डिसाइड करता है कि किस तरीके से उन कंप्लेंट्स को जो डिस्प्यूट्स अराइज होंगी ट्रेड के अंदर उसको एड्रेस किया जाएगा। तो व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर? सबसे पहले नोटिफाई किए गए कुछ गुड्स जिनको इंस्पेक्शन के बाद ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि अब तो कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि खुद सेल्फ सर्टिफाई करके गुड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने आप में एक ब्रांड नेम बन चुके हैं कि उनके गुड्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी को नोटिफाई कर रखा है, उन गुड्स के लिए ये जिम्मेदारी होती है कि एक्सपोर्टर की कि वो कंफर्म करे इन स्टैंडर्ड्स को और उसके हिसाब से ही एक्सपोर्ट करें। अगर ये प्रोविजंस वायलेट होते हैं तो उसके ऊपर पीनल एक्शंस लग सकते हैं कस्टम ड्यूटी एक्ट के अंदर और एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट 96 के अंदर। रूल 11 ऑफ द फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन रूल्स, जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसी गुड्स को तो उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, और अगर इंपोर्ट करें तो उसके लिए बिल ऑफ ट्रेडिंग इशू देना है। तो उसके अंदर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन क्या है गुड्स का जो आप इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें अलॉन्ग विद इट्स वैल्यू एंड क्वांटिटी। और यहाँ पे आप एक साइन करोगे फुटनोट पे बिल ऑफ सप्लाई पे कि हम जो एग्रीमेंट हुआ है उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रिसीव हो रहे हैं। What are disputes that may arise in the foreign trade transactions? डिस्प्यूट हो सकती है एक फॉरेन बायर के थ्रू अगेंस्ट अगेंस्ट एन इंडियन एक्सपोर्टर कि आपके गुड्स क्वालिटी को कंफर्म नहीं करते हैं जो कि हमने एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स के अंदर लिखा हुआ था। वहीं अपने जो इंपोर्टर्स हैं, जो इंडियन इंपोर्टर हैं, उनको भी ये सेम कंसर्न हो सकती है कि जो गुड्स हमने इंपोर्ट करें वो भी पर्टिकुलर क्वालिटी जो कि एग्रीड थी टर्म्स एंड कंडीशंस में उसके हिसाब से नहीं है। एंड थर्ड इज कि अनएथिकल कमर्शियल डीलिंग्स हो सकती है, जैसे कि जो गुड्स हमने एग्री किए थे उनके अलावा कोई गुड्स सप्लाई किए हैं या गुड्स जो हमने एग्री किए थे वो सप्लाई किए पर पार्शियल सप्लाई नॉन सप्लाई हो गया, या लेट डिलीवरीज हो रही है जिसमें अपन शेड्यूल्स के हिसाब से डिलीवरी नहीं कर रहे या शेड्यूल्स के हिसाब से पेमेंट्स नहीं आ रही है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि फ्री फ्लो मेंटेन करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्टर के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रहा है उनका टाइमली सेटलमेंट हो ताकि फ्री फ्लो हो सके गुड्स का और जिसमें कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत थी कि आसानी से एड्रेस भी कर सके सिचुएशंस को टाइमली मैनर में रिजॉल्व किया जाए। तो इंडिया के कोर्ट में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बार यहाँ पे केस ज़्यादा सालों से चलता है। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CQCDT कहता है। ये रीजनल अथॉरिटी के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी DGFT के अंदर, और ये जो फॉरेन बायर्स हैं या जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं इंपोर्टर्स हैं, जो फॉरेन डीलर्स हैं और जो इंडियन डीलर्स हैं, उनके बीच में जो भी क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स हो रही हैं या ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव एक्शंस लेती है ताकि वो आराम से एड्रेस हो जाए और टाइमली मैनर में रिजॉल्व हो जाए। कंप्लेंट करने का तरीका होता है कि एक तो फॉरेन डीलर है वो इंडियन कमीशन या हाई कमीशन जो कि अब्रॉड में एस्टैब्लिश है डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। वो इंडियन कमीशन जो इंडियन मिशन है और हाई कमीशन है वो DGFT को एड्रेस करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो CQCDT के अंदर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए इनिशिएट कर सकें प्रोसीडिंग्स को, या फिर वो डायरेक्टली DGFT के पोर्टल पे जाके ही अप्लाई कर सकते हैं रीजनल ऑफिस को कि वो CQCDT के अंदर इनिशिएट करें उनकी प्रोसीडिंग्स को ताकि वो एड्रेस कर सके सिचुएशंस को जो अराइज हुई है। तो हमें इंडियन डीलर वो लोकल ऑफिस ऑफ DGFT तक जा सकता है और उस वहाँ पे मैटर्स के फैक्ट्स को देख के कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकता है। लोकल ऑफिस ऐसे मैटर को DGFT के हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड कर देगा एंड वो सब्सिक्वेंटली उसको फॉरेन ट्रेड डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इशू कर देगी। द सेम विल बी फॉरवर्ड टू द इंडियन मिशन अब्रॉड। अगर इंडियन मिशन जो है वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव जो फॉरेन कंट्री है उसकी जो कंसर्न अथॉरिटीज है जो इस मैटर में डील करती है उनको ही फॉरवर्ड कर देंगे। Efforts will be made to resolve the matters amicably as possible. An action will be taken against the erring entity in terms of Foreign Trade Development and Regulation Act 1992 and Foreign Trade Regulation Rules 1997. Indian missions are satisfied about the malefide of any foreign entity. They shall send such information to DGFT for circulations amongst the EPC community, both PCGC and other regulatory information. तो अगर इंडियन इंपोर्टर जो है या जो एक्सपोर्टर है उसके अगेंस्ट में ये पता चलता है कि ये मैलिफाइड एंटिटी है जिसने कोई फ्रॉड किया है, जिसने कुछ गलती करी है, तो उसके अगेंस्ट में फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्या क्या एक्शंस लिए जा सकता है। तो सबसे पहला आता है कि सेक्शन 8 के हिसाब से DGFT एम्पावर्ड है कि वो सस्पेंड कर सकती है और कैंसिल कर सकती है कोई भी जो आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर है। बिना इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर के आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते अनलेस आपकी लिस्ट आपको जो सर्टेन नोटिफाइड गुड्स हैं उसके लिए हमें IUC नंबर नहीं चाहिए होता है। सेकेंडली DGFT जो है वो रिफ्यूज कर सकता है कि हम ग्रांट नहीं करेंगे या लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे या सर्टिफिकेट्स को रिन्यू नहीं करेंगे, स्क्रिप्ट या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको फाइनेंशियल या फिजिकल बेनिफिट ग्रांट करता है। ये सस्पेंड भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है किसी भी लाइसेंस को, सर्टिफिकेट को, स्क्रिप्ट को या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जो कि आपको फाइनेंशियल या फिजिकल बेनिफिट दे रहा है। और इसके अंदर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको इम्पोज की जा सकती है।
सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर सबसे बेसिक जो एम है वो ये है कि किस तरीके से हम क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है, यानी कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, जिसमें मेन प्रिविलेज जो ली गई है वो एक्सपोर्ट को दी गई है, कि हम डिजिटल इकोनॉमी में किस तरीके से प्रमोट करें। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पर उसमें जो ई कॉमर्स का जो रोल है एक्सपोर्ट्स के अंदर वो इतना, उसका शेयर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कॉरस्पॉन्डिंगली यूएस के अंदर है। क्योंकि अभी नेटवर्क हमारे पास टेक्नोलॉजी सब भी है, फिर भी उसके बाद भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जो है उनको इतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए ये उसको प्रमोट करने के लिए चैप्टर लाया गया था। E-commerce export of goods and services. Now, e-commerce क्या होता है? It means selling through internet on an e-commerce platform, payment for which shall be done through international credit card, debit card, or other authorized electronic payment channels, and is specified by the RBI from time to time. E-commerce के दो सबसे जो important components होते हैं, वो होते हैं एक तो e-commerce platform. E-commerce platform जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है वेब पोर्टल की तरह, जिसमें हम बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को थ्रू इंटरनेट। फॉर एग्जांपल जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है आज अमेजॉन है और अलीबाबा है। उसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट्स ई कॉमर्स में प्रमोट किया है वो इंडिया पोस्ट ने किया है, मेड इन इंडिया, और इस तरीके से ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है। सेकंड इज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, एनी सर्विस प्रोवाइडर हु प्रोवाइड लॉजिस्टिक सर्विसेज टुवर्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। लॉजिस्टिक प्रोवाइडर का सबसे जो मेन काम होता है वो होता है कि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स को कैसे ले जा सके। और जब बात एक्सपोर्ट्स की आती है तो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है, क्योंकि वो डिफरेंट लॉजिस्टिक मूवमेंट्स अरेंज करेगा ताकि इंडिया में जो गुड्स बने या फॉरेन में जो गुड्स बने उनको रिस्पेक्टिव फॉरेन कंट्री के अंदर हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। ई कॉमर्स के थ्रू जो सबसे मेन रूट होता है वो होता है कॉमर्स कुरियर सर्विसेज और पोस्ट के थ्रू भी आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। पहले ये लिमिटेशन थी कि हम कुरियर सर्विसेज के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो 5 लाख रुपीस पर कंसाइनमेंट का वैल्यू लिमिट हमें अलाउड था। अभी ये जो लिमिट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया 10 लाख रुपीस के हिसाब से। उसी तरीके से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं नोटिफाइड गुड्स का, पर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोहिबिटेड है जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि पैरिशेबल गुड्स हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, पैकेजिंग थोड़ी हैवी वैसी होती है कि डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इनको अलग से नोटिफाई करके मना कर दिया गया है कि अगर आप कुरियर और पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, पैरिशेबल गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली वेपन्स तो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, गोल्ड हो या सिल्वर हो, किसी भी फॉर्म में हो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते थ्रू कुरियर या पोस्ट। उसके अलावा दूसरी जो सर्विसेज हैं, दूसरे जो गुड्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक नेगेटिव लिस्ट है वो इसमें स्पेसिफाई कर रखी है कस्टम एक्ट, जिसके हिसाब से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते कुछ गुड्स का थ्रू कुरियर और पोस्ट। प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हैंड होल्डिंग एंड आउटरीच टू प्रमोट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। हीराज बंधु स्कीम जैसे कि पहले डिस्कस हुई थी, उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसके हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कस्टम अथॉरिटी, इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड नॉलेज पार्टनर्स के साथ मिलके जो ई कॉमर्स के लिए DGFT जो है एक आउटरीच एक्टिविटी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वर्कशॉप्स कहते हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हम अवेयर कर सके जो हमारे MSMEs हैं कि एक्सपोर्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोसेसेस क्या होते हैं और उनकी स्किल डेवलपमेंट कर सकें। सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट थ्रू पोस्टल रूट, डाक निर्यात केंद्र। अगर आप पोस्ट के थ्रू कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन होता है वो ये होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको एक FPO पे जाना पड़ता है, जो कि फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज है। ये इंडिया के अंदर ज़्यादा रीजन्स के अंदर इस्टेब्लिश नहीं है, और लैंडलॉक रीजन या बैकवर्ड रीजन है उसमें ये सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे मेजरली MSMEs को प्रमोट किया जा रहा है इस्टेब्लिश होने के लिए। तो अगर MSMEs वहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी और कुरियर का पोस्ट सर्विसेज को यूज़ करके एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। इसके लिए एक डाक निर्यात केंद्र करके एक फैसिलिटी लाई गई थी, इसके पोर्टल पे जाके हम एक फॉर्म भर सकते हैं जिसके थ्रू वो रूट कर देगा डाक निर्यात केंद्र को अलॉन्ग विद द FPO, जिसमें लैंडलॉक रीजन या बैकवर्ड रीजन है वहाँ से भी गुड्स को हम FPO से पहुँचाएंगे, जो कि फर्दर is e-commerce export hub. The objective of this scheme is to establish areas as e-commerce export hubs, which could act as a center for Febio business infrastructure and facilities for cross-border e-commerce activities. तो ECH के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है, जैसे कि स्टोरेज, पैकेजिंग, लेबलिंग, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, डेडिकेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग टू सर्विस ऑफ द लॉजिस्टिक हब। ये सब इसके थ्रू हम ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं हब्स के थ्रू। इस ECH को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव व्हिच इज फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हाट आर SCOMEX? SCOMEX आर ड्यूअल यूज आइटम्स, वो आइटम जिसको हम सिविल यूज के लिए यूज कर सकते हैं एज वेल एज इसको हम मिलिट्री यूज के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर एल्यूमिनियम एलॉय है
ये इंडस्ट्रियल यूज होता है जिसके अंदर हम जिसको यूज करते हैं रॉक क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स के अंदर, बाइसाइकिल के कंपोनेंट्स के अंदर और एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर्स के बनाने के अंदर। और यही आइटम अगर टेररिस्ट को पकड़ा दिया जाए तो वो एक MI16 करके राइफल्स भी बना सकता है, इसका वेपन यूज भी हो सकता है। तो ऐसे आइटम्स के लिए जरूरी है कि इसको एक्सपोर्ट करते समय ध्यान रखा जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत सारे जो कन्वेंशन है उसका पार्ट है, जैसे कि 1972 का बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, 1972 का केमिकल वेपन कन्वेंशन, 2009 का स्टॉक पाइल डिस्ट्रक्शन, 2017 दिसंबर का वेस्टर्नर अरेंजमेंट, इन 2018 में जनवरी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप कन्वेंशन। ये ऑब्लाइज करते हैं कि इंडिया को जो रिफॉर्म जो कि एग्रीमेंट्स के अंदर इस्टेब्लिश हुए थे, तो ये जरूरी है इंडिया के लिए कि आप इंश्योर करो कि ऐसी कोई भी एक्सपोर्ट जो कि ड्यूअल यूज आइटम्स है उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट किया जाए। So these are dual use items, which are goods and technology which can satisfy more than one goal at any point of time. Expensive technology that would otherwise benefit only civilian commercial interests can also be used to serve military purpose if they are not otherwise engaged. Why such regulations are needed we have discussed in detail. Now, what are SCOMET regulations in India? Export of dual use items, including software and technology, having potential civilian and industrial applications, as well as use in weapons of mass destruction, is regulated. It is either prohibited or is permitted under an authorization unless specifically exempted. Now, SCOMET list is National Export Control List and is aligned to the control list of all the multilateral export control regimes. SCOMET list को divide कर रखा है 8 कैटेगरी के अंदर, 9 कैटेगरी के अंदर 0 से लेके 8 तक, इसमें 7 जो है अब तक रिजर्व कर रखी है, इसके अंदर कोई भी आइटम अभी तक बताया नहीं है। जो SCOMET की लिस्ट है वो अपेंडिक्स 3 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ ITC-HS एक्ट के अंदर बता रखा है, और कुछ कैटेगरीज का रेफरेंस मैंने दे रखा है यहाँ पे साइड पर। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का परमिशन चाहिए ताकि मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकूँ। जब तक इन लाइसेंसिंग अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा इन गुड्स को मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि no authorization is needed for supply of SCOMET items from DTA to SEZ. All supplies should be reported to the Development Commissioner within 1 week of such supply in case supplies are made from DTA to SEZ. Export of SCOMET items from SEZ or EU physically outside India required requisite authorization as discussed with the different categories in the previous slide. Exporter has been notified by DGFT or he knows or has reason to believe that an item not covered in SCOMET list has a potential risk of use. The exporter of such an item may be denied or permitted subject to the grant of a license. Imported goods are not allowed to be exported from custom-bounded warehouse without an export authorization. सबसे पहले अगर एक्सपोर्टर को अगर SCOMET आइटम एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म में DGFT को एक आयात नियम फॉर्म ENF 10A के अंदर एक अप्लाई करना पड़ेगा DGFT के अंदर। DGFT IMWS जो कि इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप है, जो कि कंसिस्ट होते हैं ज्यूरिडिक्शन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हिसाब से, जो कि आपको ऑथराइज करता है एक्सपोर्ट से बनाना होता है। DGFT वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगी आपकी ज्यूरिडिक्शन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, जो कि NOC देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर वो अप्रूव करता है आपके एक्सपोर्ट को, NOC या फिर नहीं देगा तो ऐसी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ये ज्यूरिडिक्शन लाइसेंसिंग अथॉरिटी DGFT को कम्युनिकेट कर देगा, और DGFT कॉरस्पॉन्डिंगली उसको एक्सपोर्टर को कम्युनिकेट कर देगा। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक बार अगर आपको लाइसेंस मिलता है तो 24 मंथ्स के लिए मैंने होता है, एंड 24 मंथ्स की एंडिंग से पहले आपको वापस एक बार उसको रिवैलिडेट कराने के लिए DGFT को ऑनलाइन फॉर्म वापस सबमिट कराना पड़ेगा। फर्दर प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा आपने समझा।